हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो हटिए। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने क्या कहा था कि पूरी कोई भी होस्ट सिस्टम है, चार्ज सिस्टम है, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल वर्ड इज डिफाइंड ओनली फॉर those charge system potential. In electrostatics we define potential only for those charge system which are finite in size. अगर उनका साइज इनफाइनाइट है तो वी नेवर एवर टॉक अबाउट देयर एब्सोल्यूट पोटेंशियल, वी ओनली टॉक अबाउट देयर पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट के लिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर +1 का कूलॉम का चार्ज, +1 कूलॉम का चार्ज इस जगह से इंफिनिटी जाता है, धीरे जाए भाड़ में गया तेज जाए। ये जो धीरे पीरे चोली प्लोली करते, कुछ भी धीरे जाए तेज जाए, नाच नाच के जाए, घूम घूम के जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर चार्ज यहां से इंफिनिटी जाता है तो ये चार्ज सिस्टम उसके को धक्का मार के उसके ऊपर काम कर रहा है, उस काम की वैल्यू V के बराबर होती है। यानी वर्क पोटेंशियल, अब अंग्रेजी में बोलूं तो potential at a point due to given charge system is defined as work done by that charge system in bringing that in sending that charge from that point to infinity. मतलब अगर +1 के कूलॉम को इस पॉइंट से इंफिनिटी तक जाना है तो ये उसके ऊपर जितना काम करेगा वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो अगर मैं ये पॉइंट मानूं I पॉइंट है और ये F पॉइंट है, तो VI का मतलब हो गया कि एक कूलॉम का चार्ज यहां से इंफिनिटी जाएगा तो ये कितना काम करेगा। VF का मतलब हो गया कि एक कूलॉम का चार्ज यहां से इंफिनिटी जाएगा तो कितना काम करेगा। तो इसका मतलब है अगर एक कूलॉम का चार्ज यहां से यहां गया है तो कितना काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो यहां से इंफिनिटी तक किया है VI, यहां से इंफिनिटी तक किया हुआ है VF, तो यहां से यहां तक किया होगा VI माइनस VF। तो इसका मतलब है एक कूलॉम का चार्ज यहां से वहां इंफिनिटी तक जाएगा, 1 से 2 जाएगा, तो उस पे वर्क डन बाय चार्ज सिस्टम होगा VI माइनस VF। इसका मतलब है एक तरीके से मैंने VI माइनस VF लिख दिया वर्क डन एज अ परिभाषा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो VI माइनस VF का मतलब हो गया वर्क डन एक कूलॉम के चार्ज पे। तो हमें वर्क डन की बेसिक परिभाषा आती है, दैट इज डिफाइंड एज F डॉट ds। इंटीग्रेशन F डॉट ds डिफाइन होती है, F कितना हो गया एक कूलॉम के चार्ज पे E के बराबर। तो डॉट ds कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल। तो ये एक रिलेशन जो है आपके पास है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। This relation you have to remember because there are two. So first of all, you have to, whenever you need to calculate potential because of an electric field, then you know the exact relation between them. And sometimes they ask you questions. They will give you electric field and ask potential. First of all, remember one thing. Potential difference निकालने के लिए या potential निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत कहां से कहां तक, उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक हर जगह पड़ती है। तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल है। तो वहां पे रास्ते की हर जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड काम आ रही होगी। तो सिर्फ एक पॉइंट की 0 होने से मेरा क्या सेहत असर पड़ रहा है, बीच में 100 पॉइंट की 0 हो जाए, पर वहां तो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इसलिए पोटेंशियल के 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना या इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने से पोटेंशियल का 0 होना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। क्योंकि दुनिया का फॉर्मूला जो मगे हुए हो तो हर होस्ट पॉइंट चार्ज नहीं होता। पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज के दोनों में Q की प्रोपोर्शनलिटी आती है, तो Q अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब Q 0 होना गया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। एंड इन द सेम वे हम कुछ फॉर्मूले याद कर लेंगे और उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके ही पोटेंशियल निकाला करेंगे जितने भी दुनिया में चीजें हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको सबसे पहली बात हमें यह है कि हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अब VI माइनस VF जो हमारे पास है वो इंटीग्रल E डॉट ds है। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा मेरे बेटा, तो मैं लिखूंगा VI माइनस VF को लिख सकता हूं माइनस dV। माइनस dV इफ आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ
डिफरेंशियल, और इंटीग्रेशन इधर हटा दूंगा, वो हो जाएगा माइनस dv इक्वल टू ई डॉट डी एस, minus dv equal to E dot ds. This formula is very, very important. Why this formula is very, very important? Because sometimes they will give you the potential and ask this. तो E dot ds मैंने कहा कि क्या होता है भैया, तो E dot ds मैंने कहा कि क्या होता है भैया, तो हमने कहा E dot ds होगा तो माइनस dv जो बन जाएगा वो बन जाएगा ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz, ez dz, ये बन जाएगा हमारा माइनस डीवी की वैल्यू आ गई EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। अब आपने कहा सर कैसे लिखोगे, EX की वैल्यू कैसे निकालोगे, EY की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो किसी ने कहा हाँ यार मुश्किल बात तो है, काश ऐसा होता, किसी ने ऐसे कहा काश ऐसा होता कि डिवाइड EZ 0 होते। मैंने कहा फिर क्या होता, फिर कहता मैं EX निकाल देता। मैंने कहा कैसे, उसने कहा डिवाइड EZ 0 होते, अगर डिवाइड dz 0 होते तो मेरा EX निकालना बहुत आसान हो जाता, पोटेंशियल दिए होने पे बस डिफरेंशिएट करता और काम चल जाता। तो मैंने कहा इसी तरीके से मानकर निकाल दो, तो यार बात बड़ी बढ़िया बोली, इस तरह मान के निकाल दो क्या फर्क पड़ रहा है, असली में है कि नहीं। तो उसने कहा डिवाइड dz 0 मान के निकाल लो, उसने कहा y और z को कांस्टेंट मान लो और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग द x। हमने कहा क्या जादू बड़ी बात है, तो हमने कहा ऐसा कैसे करते हैं, नया तरीका सिखाया आपने। हमने कहा है तो डिफरेंशिएट करने का तरीका, पर दो को रोक के है, कुछ नाम रखो कुछ नाम रखो, और हमने कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव। Why partial? Because I am assuming two are constant. It means it is not changing with respect to every space element. तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, एंड टू रिमेंबर दिस कि यू आर कीपिंग, इतना बड़ा चीज लिखने की जगह लोगों ने कहा कि इसका सिंबल बदल दो और उनका माइनस डेल वी बाई डेल एक्स कर दो। तो इसका मतलब वही है, या तो इस तरह पूरा लिखो या याद कर लो, करना तो वही है, कीपिंग वाई जेड कांस्टेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट EX। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल्स फॉर्मूला। ये हम पोटेंशियल के फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और हम कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के याद रखे हैं। हाँ बिलीव मी, इस बार कम याद रखना है क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले थोड़े कम है संख्या में, पर आपको निकालना बहुत आसान है। आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण, अच्छा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे मत करना लेफ्ट राइट मत करना, पर हाँ ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है क्योंकि वर्क डन के हिसाब से डिफाइन है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव बिकॉज इट डिपेंड्स कि द फोर्स डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आर सेम और नॉट। इफ दे आर नॉट देन ऑब्वियसली पोटेंशियल वर्क डन कैन बी निगेटिव, सो पोटेंशियल कैन बी निगेटिव। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। तो अगर क्यू चार के कारण आर डिस्टेंस पर किसी ने कहा यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, मैंने कहा मेरे सर ने बताया था कि यहां से इंफिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़े वही VI माइनस VF है, तो मैंने इसको इनिशियल मान लिया और इंफिनिटी को फाइनल पॉइंट मान लिया। तो मैंने कहा VI माइनस VF इंफिनिटी पे छोड़ दोगे, इंफिनिटी पे छोड़ दोगे तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। क्यों? आपने कहा सर ऐसा क्यों? मैंने कहा क्या बोला बे, वहां से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो इंफिनिटी पे छोड़ दूंगा तो वहां से वहां तक ले जाने में वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी इंफिनिटी पे, ऑब्वियसली वहां का पोटेंशियल 0 होगा। तो वहां का पोटेंशियल 0 होगा तो V माइनस 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dl KQ बाई R स्क्वायर dr R to infinity. This is how we can find out potential at that point, and that will be the answer. I hope it is clear that this is how we define potential. This is how we define potential, and when you integrate, you will yourself will get V is equal to KQ by R. I hope you can do that. And believe me, multiple students, multiple teachers do this kind of mistake because they don't understand the basic फॉर्मूला। कई बार क्या होता है वर्क डन निकालने में उन्होंने याद किया होता है इंफिनिटी से वहां तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, और वो जब करते हैं मेहनत करते हैं सवाल लगाते हैं भूल जाते हैं, बीच में कुछ करके वैल्यू लिख देते हैं, मक्के नहीं आए हैं अगर तो उनके माइनस की एरर आ गई, और वो माइनस की जो एरर आ गई वो उनको समझ में कहां से आ गई, उन्होंने कहा अच्छा हाँ मैंने वो माइनस का प्लस कर दिया था, लो प्लस माइनस आ गया आंसर। इनको आंसर तो पता है, डेरिवेशन में समझा नहीं ढंग से कि क्या होता है। वर्क डन जब निकालते हैं कभी भी तो आपने जो वेरिएबल लिया है जहां पर फोर्स लिख रहे हैं उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, भाड़ में गया वो असली में किस दिशा में जा रहा है वो हमेशा लिमिट से आता है।
उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जहां से आपने आर माना है। तो अगर मैं यहां से आर मान रहा हूं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट डी आर इधर की तरफ मानूंगा, और के क्यू बाई आर स्क्वायर का फोर्स भी इधर की तरफ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आ गया। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कर, तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा और ये पॉइंट चार्ज कारण के क्यू बाई आर आया। अब इसका इस्तेमाल करके हम बाकी पोटेंशियल्स के फॉर्मूले निकालेंगे। बाकी पोटेंशियल के फॉर्मूले निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हमें याद रखने हैं। पहली बात, अगर एक यूनिफॉर्म स्फीयर है या नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब और आसान भाषा में, अगर कोई भी पॉलीगन है, 2D पॉलीगन और 3D पॉलीगन। 3D पॉलीगन क्या होता है? 2D पॉलीगन घुमा दो तो बन गया 3D पॉलीगन। इधर इट इज अ 2D पॉलीगन और 3D पॉलीगन। 3D पॉलीगन हो या 2D पॉलीगन हो, अगर उसके सेंटर पर पोटेंशियल चाहिए, उसके वर्टिसेस में चार्ज रखे हैं एंड द चार्जेस आर इन द वे एज दे वांट टू बी, आई मीन दे मे बी यूनिफॉर्म, दे मे बी नॉन यूनिफॉर्म, दे मे बी एनी डैम थिंग, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर or any point on the axis, if you want to find out electric field at any point on the axis, electric potential at any point on the axis, whether the distribution is same or not, whether they have positive charge, negative charge, whatever they have, the potential at the axis is clearly k q total with sign upon under root x square plus a square. What the hell is this A? A is the same distance what we used to have in electric field calculation. तो इसके कारण पोटेंशियल के क्यू टोटल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। जैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर दे रखा है, कहीं चार्ज डेंसिटी प्लस की है, माइनस की है, माइनस की है, प्लस की है, और आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, के क्यू टोटल अपॉन, अगर ये डिस्टेंस आर है तो आर इज द आंसर, के क्यू टोटल अपॉन आर इज द आंसर। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जब भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है, एक बात याद रख लेना, एनर्जी किसी की होती है, एनर्जी किसी के पास होती है। तो यानी इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, हाउ मच एनर्जी इट इज हैविंग। पोटेंशियल से कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेंशियल इस डिस्ट्रीब्यूशन कि इसने फैला रखा है अपना पोटेंशियल हर जगह, जब कोई आएगा तो उस पर काम करेगा, पर इसके पास खुद पर्सनली कोई आए ना आए, इसके पास काम करने की कितनी ताकत है, उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन है। इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, सिस्टम की एक सिस्टम जो है वो कितना काम कर सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सिस्टम क्या होगा? चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सिस्टम कितना काम कर सकता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो कितना काम कर सकता है, उस सिस्टम के पास कितनी काम करने की औकात है। और ऑब्वियसली सिस्टम में एटलीस्ट 2 चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर एक पार्टिकल होगा तो भैया काम कैसे करेगा? काम करने के लिए सिस्टम के पास होना चाहिए फोर्स, फोर्स लगाने के लिए 2 लोग तो चाहिए, बिकॉज फोर्स इज अ मैटर ऑफ इंटरेक्शन। 2 लोग होंगे तभी तो किसी को फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो काम कैसे होगा? तो काम करने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए 2 लोग चाहिए। इसलिए एनी सिस्टम विच हैज टू एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स, उसके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी वर्ड डिफाइन है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टम के पास एटलीस्ट 2 पार्टिकल होने चाहिए ताकि हम पोटेंशियल डिफाइन कर सके। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होती है? तो हमने कहा उसके पास जितनी काम करने की ताकत होती है, यानी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि हाउ मच कैपेबिलिटी इट हैज टू वर्क, हाउ मच कैपेबिलिटी इट हैज टू वर्क। कैपेबिलिटी कितनी है इसके पास, उसके बारे में हम कहते हैं कि इसके पास कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, उसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का। अब कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, इसका पता कैसे लगाएं? तो बड़ी मुश्किल काम है, आप खुद ही समझिए। आप में जितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, आप उतना काम कर थोड़ी रहे हैं, आप उतना काम करते थोड़ी है। कैपेबिलिटी किसी के अंदर छुपी हुई है, वो कितना काम कर सकता है मुझे क्या पता? मुझे तो पता तब चलेगा जब वो काम करेगा। काम करेगा तो पता चलेगा कैपेबिलिटी। एक बंदा है कैपेबल है, पर ऐसे पीछे होकर पीछे करके टांग ऊपर करके बैठा हुआ है, तो इसका कैपेबिलिटी है, काम नहीं कर रहा है। तो हमने कहा यार कि कैसे पता लगाए? तो ये बड़ा मुश्किल काम था कैपेबिलिटी का पता लगाने के लिए। तो हमने इस तरह से सोचा कि मान लीजिए ये बंदा जब कुछ भी नहीं कर सकता था, यानी ये था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये सोचने का तरीका है, उस
उस सोचने के तरीके को समझिएगा कि जब भी एक सिस्टम है वो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसका पता लगाना है। तो पहले मैथमेटिकली हमें क्या पता है? अच्छा एक बात बता, मेरे पास काम करने की काबिलियत है, मेरे पास काम करने की काबिलियत है, मैं एक सिस्टम हूं, मेरे पास अंदर काम करने की काबिलियत है, कमरे में घुसा, आज की वीडियो क्लास के लिए मैं इस स्टूडियो में घुसा और स्टूडियो में मेरे पास काम करने की ताकत लगी घुसा। मैं यहाँ पे चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, चिल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, सब कर रहा हूं, दिमाग चला रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं। काम कर रहा हूं तो मैंने अगर काम किया तो मैं जब बाहर यहां से जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ी हुई होगी, घटी हुई होगी? तो आंसर है डेफिनेटली घट जाएगी, क्योंकि सर आपने काम करके चले गए। तो एक बात कॉमन सेंस का रूल है, इसको जबरदस्ती लोग कठिन फॉर्मूला बना देते हैं कि जब भी सिस्टम काम करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू ui माइनस uf। दिस इज द ओनली मैथमेटिकल रिलेशन आई नो, दिस इज द ओनली मैथमेटिकल रिलेशन आई नो कि जब भी कोई सिस्टम काम करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। इसको याद करना कौन सी बड़ी बात है यार? मैं काम करूंगा तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, अब काबिलियत कम हो जाएगी, क्योंकि मैं काम कर चुका हूं यार, तो काम कर चुका हूं तो मेरी काबिलियत कम हो जाएगी, ui माइनस uf है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, दिस इज द ओनली रिलेशन यू नो, दिस इज द ओनली रिलेशन यू नो। लोग उसको मुश्किल से लिख देते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अरे जब हाड़ में गया ना, समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या है समझो, समझो फील इसका कि ये भैया मतलब क्या है। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया कि हाउ मच कैपेबिलिटी आई हैव टू परफॉर्म वर्क, देन ऑब्वियसली इफ आई परफॉर्म वर्क देन माय पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज डाउन, एंड माय पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज डाउन बाय द अमाउंट आई वर्क हियर। मैं जितना काम करूंगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी मेरी कम हो जाएगी। इज द ओनली फॉर्मूला यू मस्ट नो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, कि जब भी कोई सिस्टम काम करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कितनी कम होगी? जितनी वो कर रहा है। अब बात है, इससे हम ui नहीं बता सकते, uf नहीं बता सकते, तो हम क्या करें? मैंने कहा कि सर आप बताइए कि सिस्टम की u कितना है, ये बताइए। ui माइनस uf, तो मैं आपकी बात बहुत लॉजिकल लगी, समझ में आ गई मुझे, पर अगर u निकालना हो तो कैसे करेंगे? मैंने कहा u निकालना हो तो कैसे करेंगे, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोचा, सोच के डिफाइन करते हैं। जब चीजें डिफाइन करते हैं तो फिलोसफिकली डिफाइन करते हैं, फिर उसके उसको मैथमेटिक्स से बात करते हैं। मैंने कहा मान लो एक सिस्टम से मेरे को आपने एनएमएस सर को क्लास में भेजा कि भैया जाओ लेक्चर लो, लाइव बच्चों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 कंप्लीट करो, बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं बच्चे, उसको कंप्लीट करो। और उसके बाद आपने मुझे भेजा और बाहर से लगा दिया ताला, और इन लोगों ने कहा, मेरे आईजे की सारी टीम ने कहा कि अब तुम तब तक काम करते रहोगे एनएमएस जब तक मर नहीं जाओगे। यार ये तो कुछ जाती हो गई, पर मेरे को इन्होंने दे दिया कि तू करता रहे काम जब तक तू मर ना जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि एक सिस्टम से अगर मैं तब तक काम कराऊं जब तक वो मर ना जाए, यानी टिल द डेड एंड, एंड आ गया उसका, तब तक काम कराऊं, तो अगर जितना काम उसने किया है, अगर वो बात मैं कहूं तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको लेके ये घुसा है, क्योंकि इतनी एनर्जी थी खर्च कर दी काम करके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर मेथड। फ्यूचर मेथड का मतलब ये होता है अ सिस्टम से नथिंग होने में, सिस्टम जो बना हुआ था पूरा एनएमएस को खड़ा किया हुआ था इतना बड़ा, उसके वो मिट्टी में मिल जाए, मर जाए, उसके तब तक जितना उन्होंने काम किया, सिस्टम अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट से नथिंग होने में जितना वर्क डन करेगा, वही सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इज इट अ मीनिंगफुल लाइन? बहुत ही बढ़िया सोचा बंदों ने यार, क्या बढ़िया बात सोची, बहुत बढ़िया समझ में आया मुझे, बहुत बढ़िया। तो सर ने कहा कि ये बहुत बढ़िया है, तो दिस इज द डेफिनेशन। कैसे? अब हम चार्ज सिस्टम के लिए इस डेफिनेशन क्या कहेंगे कि अगर एक चार्ज सिस्टम है, कैसा भी चार्ज सिस्टम है, कैसे भी दिया हो मुझे नहीं पता, चाहे स्फीयर हो या कुछ भी, अगर इसको छोड़ दिया जाए कि तू जा भाई, टूट जा, फूट जा, मर जा, जा जो करना है कर, और ये फाइनली इसके चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे चले गए, इन्फिनिटी पे चले गए, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, दूर दूर चले गए सब। अब इनके पास ना कोई फोर्स है, ना कोई ताकत है, ना कोई काम है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा मतलब मर गया सिस्टम। अगर मर गया सिस्टम तो इसका मतलब है इसके पास जो एनर्जी है, इसको यहां से इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए, हर पार्टिकल को दूर दूर इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए जितना काम इस सिस्टम ने किया होगा, वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। एम आई मेकिंग सेंस हियर? So this is how we define potential energy. The another way is कि मान लो nothing था,
नथिंग था। एनएमएस सर जब पैदा हुए थे, पैदा नहीं हुए थे, पैदा कर कर आज तक इनको इतना बड़ा करने पे इनके ऊपर जितना मेहनत की गई है, खाना वाना खिला के इनको ताकतवर बनाकर, इनका दिमाग बढ़ाकर, पढ़ा वढ़ा लिखाकर आज जो यहाँ खड़ा किया गया है, इनके ऊपर जितनी मेहनत की गई है इनको आज ऐसा बनाने में, वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। जो मेरे ऊपर किया गया काम है, मेरे मास्टरों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरी फैमिली ने, मेरे पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मेरे ऊपर जो काम किया है, मुझे जो आज इस लायक बनाया है, मेरे को इस लायक बनाने में जो इन लोगों ने मेरे ऊपर जो काम किया है, वो मेरी आज पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज कॉल्ड पास्ट मेथड, यानी नथिंग से सिस्टम बनाने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आर यू क्लियर अबाउट इट? डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशंस? दिस इज कॉल्ड फ्यूचर मेथड, दैट इज कॉल्ड पास्ट मेथड। फ्यूचर मेथड, पास्ट मेथड। अब किसी का भी कोई पूछे, मैं आराम से निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि एक स्फेरिकल शेल है, आपने कहा कि भैया मेरे इस स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इस स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इस स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो मैंने कहा इस स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, इसका चार्ज Q है, रेडियस R है। मैंने कहा अभी रुको, कैसे करते हैं? मैंने इसमें इस्तेमाल किया पास्ट मेथड मतलब ये कुछ भी नहीं था और इसको मैंने ये बना दिया। तो इसके ऊपर जितना हमने एफर्ट मारा है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे ये सब काम, कैसे सोचेंगे इस बारे में? इस बारे में सोचने के लिए हमने क्या किया, मैंने कहा कि कुछ भी नहीं था तो मैंने एक प्लास्टिक का स्फीयर रखा और हमने कहा देखते हैं इस पे चार्ज क्यों इकट्ठा करता हूं, कितना काम करना पड़ेगा। तो मैं आपके इन्फिनिटी पे गया, इन्फिनिटी से मैंने DQ चार्ज लिया, DQ चार्ज लेके दौड़ता हुआ आया, पहला DQ चार्ज ला रहा हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मस्त पैदल चलता हुआ आ रहा हूं, नोबडी इज अपोजिंग मी कि यार इस DQ को लाओ या ना लाओ, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा है। तो मैं DQ चार्ज लेके आया और मैंने इस DQ चार्ज को इसके ऊपर पहना दिया, इस DQ चार्ज को इसके ऊपर पहना दिया। पहली स्टेप में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, फिर मैं आगे गया और मैं अगला DQ चार्ज लेके आया। अब अगला DQ चार्ज लेके आ रहा हूं तो ये DQ चार्ज मुझे रोक रहा है, भागो यहां से, रिपेल मार रहा है, पर मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करते हुए DQ चार्ज लेके आ रहा हूं। तो मुझे मेहनत करनी पड़ी, जितना ये अपोज कर रहा हूं उतनी मेहनत करनी पड़ी। तो मुझे कितना काम करना पड़ा इस DQ चार्ज को यहां तक लाने के लिए? आपको पता है कि यू कैन कंसीडर दिस DQ चार्ज एट द सेंटर, और वर्क डन हमें पता था, वर्क डन हमें करना पड़ता है DQ इंटू VF माइनस VI। अगर एक्सेलरेशन का वर्क डन है, पोटेंशियल वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था, तो हमें काम करना पड़ा DQ बाई R, यहां का पोटेंशियल था, इंटू DQ चार्ज लेके आया तो इतना काम करना पड़ा, K DQ बाई R, K DQ बाई R का काम करना पड़ा। अब K DQ बाई R का काम करके मैंने किया, अब मैं अगला DQ लेके आया, तो ये दो DQ यहां खड़े थे और इनका पोटेंशियल हो गया था K2 DQ बाई R। अब मैं फिर DQ लेके आया, मुझे इतना काम करना पड़ा। इस तरह से अगली बार 3 DQ पड़े हुए थे, उनके अगेंस्ट K3 DQ बाई R, अगली बार K4 DQ बाई R, और मुझे टोटल काम जो करना पड़ा इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो इनफाइनाइट बार DQ लेके आया। तो अगर मैंने इन सबको जोड़ा तो आपने देखा होगा हमारा आंसर आएगा K DQ का स्क्वायर बाई R, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू इंफिनिटी, यानी n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो हमने कहा इतना काम करना पड़ा, मैंने निकाला। तो हमने कहा K DQ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये मेरा वर्क डन हो गया। अब DQ करके n बार में चार्ज लेके आया हूं, DQ करके n बार में चार्ज लेके आया हूं, तो मैंने काम किया होगा इतना, यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया होगा। तो अब हमें समझ में आया, इसको जोड़ना है, इसको कैसे निकालें। तो हमें पता है n DQ की वैल्यू Q के बराबर है, तो U का फॉर्मूला बन गया K, एक DQ n के साथ मल्टीप्लाई हुआ n DQ, तो बन गया कैपिटल Q टोटल चार्ज। n प्लस 1 DQ और n DQ एक ही बात है, क्योंकि इन्फिनिटी है n, तो वो भी बन गया Q, और नीचे आ गया 2R। तो हमारा फॉर्मूला पहला तैयार हो गया, KQ स्क्वायर बाई 2R। तो आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं बता दे रहा हूं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 अगर यहां रखे हो R सेपरेशन पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 बाई R। और अगर एक होलो स्फेरिकल शेल है,
उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ²/2R। और अगर एक सॉलिड है हमारे पास तो उसकी एनर्जी होती है U = 3/5 KQ²/R। ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसी की भी निकाल सकते हैं। आपने कहा सर कोई सवाल करा दिए जिससे हम निकालना सीख जाएंगे, कैसे सवाल आएंगे? चलिए अब मान लो इसमें सवाल कैसा आता। सवाल इसका आता कि मान लो हमारे पास दो स्फेरिकल शेल हैं, तीन स्फेरिकल शेल है, इसका चार्ज Q है, रेडियस R है, इसका चार्ज 3R रेडियस है, चार्ज 2Q है, इसकी रेडियस 4R है और चार्ज 7Q है। अब बोलता है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इस सिस्टम को कैसे बनाया होता? तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। बना के लिखते जाते हैं। सबसे पहले मैं इस स्फीयर को बनाऊंगा, अंदर वाले को। अरे बाहर वाले को पहले थोड़ी बना दूंगा, पहले सबसे पहले किसको बनाऊंगा? अंदर वाले को जब बनाया तो बाकी कुछ तो थे नहीं, इसको बनाने के लिए मुझे पहला काम करना पड़ा KQ²/2R। रट्टाफिकेशन छोड़िए, समझिए ताकि आपको दिखाई दे इसको बनाने में कितना काम करना पड़ा। KQ²/2R क्या पहला बन गया? अब जब दूसरा 2Q लेके आ रहे थे तो 2Q को लाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, 2Q को लाने में 2Q के DQ लाके 2Q रख रहे थे तो उसमें दो लोग अपोज कर। कौन से दो लोग अपोज कर रहे थे? एक ये जो पूरा का पूरा Q अपोज कर रहा था और एक 2Q को जो हिस्सा आता जा रहा था वो अपोज कर रहा था। 2Q का जो हिस्सा आता जा रहा था वो अपोज कर रहा था। मैंने बोला ठीक है इनके दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो मैंने कहा Q के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा? तो Q को आपको पता है सेंटर में मान सकते हैं, तो 2Q को कहां लाए हैं? 3R दूरी पर। तो ये हमारा एक वर्क डन हुआ, हाफ पार्ट लिखा है KQ 2Q/3R। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि Q के अगेंस्ट उसको इतना काम करना पड़ा। अब 2Q के खुद के अगेंस्ट, तो 2Q के खुद के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा? मतलब 2Q को बनाने में अकेला बनाया होता तो कितना काम करना पड़ता, उसका फॉर्मूला तो हमें पता है। तो हमने लिखा K 2Q/2 3R। तो दिस इज द वर्क डन इन मेकिंग सेकेंड स्फीयर। एंड अब हमें तीसरे को बनाना है। तीसरे को जब बनाना है तो उसको किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? अब ये Q और 2Q ऑलरेडी यहां पे रखे हुए पॉइंट चार्ज की तरह, तो इनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और 7Q जो आया है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो पहले काम करना पड़ा K 3Q, क्योंकि Q और 2Q दोनों रखे हुए थे, इनटू 7Q। कहां दूरी पे लाए हैं? 4R दूरी पे। तो ये हुआ 3Q के अगेंस्ट। पर अब खुद के अगेंस्ट कितना? तो खुद के अगेंस्ट हो गया K 7Q/2 4R। I hope you can get this answer. This is the total work done I need to do. It means this is the total potential energy. So this is the total work done. This is the total work done. अब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे काम किया। This is how you can find out the potential energy of any system. जब भी कोई सवाल पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के निकालो, उस सिस्टम के निकालो, this is how you can find out. Where this energy is stored. आपने कहा सर ये एनर्जी इसके पास है, मैंने कहा मान लिया ये एनर्जी इसके पास है, मतलब कहां है सर? ये एनर्जी इसके पास रखी कहां है? वेयर दिस एनर्जी इज स्टोर्ड। तो आपने कहा कि एनर्जी स्टोर कहां है सर, किस जगह है? तो ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई कि यार बात तो समझ में आ रही है, एनर्जी उसके अंदर तो नहीं है। जो एक एग्जांपल देता हूं मैं स्टैंडर्ड सेब वाला, कि लोग कहते हैं कि भैया h हाइट पे सेब को ले गए m मास का तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, पर वो पोटेंशियल एनर्जी mgh जो सेब की है वो है कहां? क्या वो सेब के अंदर है? अगर वो सेब के अंदर होती तो मैं क्या करता? सेब खरीदता एक और लिफ्ट पे चढ़ के जाता 25वीं मंजिल पे और सेब को खाता। तो सेब से मुझे अगर पहले 200 कैलोरी एनर्जी मिलने वाली थी तो अब 800 कैलोरी मिलेगी, क्योंकि उसका एमजीएच भी बढ़ गया है। पर ऐसा तो होता नहीं है कि सेब ऊंचाई पे खाओ तो ज्यादा ताकत बन जाएगी। सेब ऊंचाई पे खाओ या नीचाई पे खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सेब से जो ताकत आनी है वही आनी है। इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेब के अंदर नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी सेब के अंदर नहीं है। कहां है पोटेंशियल एनर्जी? कहां है पोटेंशियल एनर्जी? तो वैसे थ्योरेटिकली अगर बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी सेब के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है। सेब के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कहां सेब रखा है, कहां अर्थ है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो इस बात को उन बड़े लोगों ने कैसे बोला? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम लाइज इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करती है, यानी कि एनर्जी इज स्टोर्ड
एनर्जी इज स्टोर्ड इन फील्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड इन फील्ड, फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, यानी इसकी एनर्जी फील्ड में स्टोर है, इसकी एनर्जी फील्ड में स्टोर है। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी मैथमेटिक्स लगाई और समझा और कहा कि क्या किया जाए। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया इसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डीई बाई डीवी, डीई बाई डीवी, ई ना कर दूं यू कर देता हूं, डीयू बाई डीवी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी पॉइंट पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। डीयू बाई डीवी की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि हम ये मानते हैं कि ये जो स्फीयर है, होलो स्फीयर है, इसकी एनर्जी इसके अंदर नहीं है, इसकी एनर्जी वहां है जहां इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे दुनिया में बाहर 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 होती है। तो हम कहते हैं इसकी एनर्जी इस रीजन में स्टोर है, दिस इज द स्पेस वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड, दिस इज द जगह जहां एनर्जी स्टोर है, ये पूरी जगह है जहां एनर्जी स्टोर है। अब आपने कहा कहां कितनी स्टोर है, तो उसने कहा कि अगर तुम किसी जगह जाओगे तो वहां पर छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करोगे, तो छोटे से वॉल्यूम में छोटी सी एनर्जी होगी, इस एनर्जी को कहेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू छोटा सा वॉल्यूम डीवी। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑफ अ चार्ज सिस्टम। तो इस तरह के सवाल भी हमारे सामने आते हैं। क्या सवाल आता है? वो बोलता है कि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से। सॉलिड स्फीयर, चार्ज क्यू, रेडियस आर। उसने कहा कि बताओ इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर कितनी एनर्जी स्टोर है, ये पूछ रहा बंदा भैया। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर पूछ रहा है। अगर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर पूछ रहा है, अब हमने कहा कैसे निकाले, क्योंकि हमें पता अब चल चुका है, यहां पर अब हमारे पास कोई मेथड नहीं है अनटिल अनलेस वी नो अबाउट एनर्जी डेंसिटी, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया एनर्जी स्टोर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो यहां से आर दूरी पे गए और एक डी आर का वॉल्यूम कंसीडर किया। इस डी आर के वॉल्यूम में क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी? आपने कहा हाँ, तो उसका वैल्यू का फॉर्मूला भी याद है आपको, के क्यू आर बाई आर क्यूब। तो उसने कहा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी स्टोर, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज द वॉल्यूम। अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूं जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, तो इसकी एनर्जी स्टोर निकल के आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर्ड हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? तो दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, दिस इज हाउ यू विल फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, एंड इफ यू कैलकुलेट इट कम्स आउट के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर। इफ यू कैलकुलेट इट कम्स आउट के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर। आपने कहा आपको क्या इंटीग्रेशन याद करके बैठे हुए हो क्या? मैंने कहा नहीं यार, इंटीग्रेशन याद तो नहीं किया है, पर मैंने फॉर्मूला याद किया है कि होलो स्फीयर की एनर्जी होती है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और सॉलिड स्फीयर की टोटल होती है 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये तो हमें याद ही करने को कहा है सर ने। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें सिर्फ बाहर बाहर फील्ड है, इसमें अंदर भी फील्ड है और बाहर ही फील्ड है। तो बाहर की फील्ड दोनों की एक जैसी है, यानी इसके भी बाहर इतनी होगी तो इसके अंदर बचा हुआ होगा 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर, विच इज के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर। दैट इज द आंसर। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द मीडियम, यानी कि मीडियम इफेक्ट। मीडियम का क्या इफेक्ट होता है? मीडियम का क्या इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मीडियम का क्या इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कोई भी चार्ज सिस्टम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है वो इस पॉइंट पर ई अगर बना रहा है तो वो ई ही रहेगी, चाहे यहां पानी भरा हो या बेंजीन रिंग, बेंजीन आपकी यहां फैली हुई हो, या ऑयल हो या आइस हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई साहब इतनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी रहेगी। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती है अगर कोई मीडियम आ जाता है तो कहीं पर भी, क्योंकि वो पोलराइज हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम मीडियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हमें समझ में आना चाहिए देयर आर टू टाइप ऑफ मीडियम। नंबर वन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर।
नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बाउंडेड हैं, यानी दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे आर नॉट रेडी टू लीव द शेल, यानी दे आर कनेक्टेड विद वन पर्टिकुलर एटम एंड वो उसी के साथ चिपके हुए हैं, घूम रहे हैं। फ्री, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। दूसरा कहलाता है कंडक्टिंग मीडियम या मेटेलिक। कंडक्टिंग या मेटेलिक, कंडक्टिंग या मेटेलिक मीडियम में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो हॉप कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, यानी दे कैन मूव इनसाइड द बल्क ऑफ, दे कैन मूव इनसाइड द बल्क ऑफ मीडियम। वो हिप हॉप यहां से कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, हिप हॉप कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है। तो अगर कोई मान लिया हमारे पास ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी ने बनाई होगी, किसी भी तरह की बना दीजिए, मैं यूनिफॉर्म बना दे रहा हूं, मैं यूनिफॉर्म बना दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पे डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पे डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पे डाल दिया, इसको करते हैं फिल। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पे डाल दिया, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मैंने यहां पर डाल दिया, यहां पर भर दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब मैंने इसके अंदर भर दिया तो हमारी येलो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगी, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो अंदर एटम्स थे, जिसमें एक न्यूक्लियस था और चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन था, उस पे इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, तो वो थोड़ा अभी न्यूक्लियस ऐसा और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगेगा, घूमेगा तो अभी भी पर ऐसे घूमने लगेगा, तो इट बिकम अ डाइपोल, एक ऐसा डाइपोल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर न्यूक्लियस इधर। तो इसके कारण यहां पर कई सारे डाइपोल्स बन जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कई सारे डाइपोल्स बन जाएंगे। इन डाइपोल्स को अगर हम देखें तो ये डाइपोल्स बन गए, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव के डाइपोल्स बन जाएंगे। जब ये डाइपोल्स यहां पे बन गए, जब ये डाइपोल्स यहां पर बन गए, ये कई सारे डाइपोल्स बन जाएंगे, मैं सारे बना नहीं पाऊंगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे डाइपोल बन गए। तो ये डाइपोल यहां पे बन गए, तो ये खुद भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया में हर जगह फैलाएंगे, खुद भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया में हर जगह फैलाएंगे। तो अगर आप देखें तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इफेक्टिवली यहां पर निगेटिव 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 चार्ज आ गया और यहां पर मोटा 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 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मोटा मोटा। तो इसे कहते हैं डाइपोलराइजेशन। तो मीडियम गेट पोलराइज्ड और उसका पोलराइजेशन हो गया। अब ये मीडियम पोलराइज हो गया, उसका पोलराइजेशन हो गया, मीडियम का पोलराइजेशन यहां पर हो गया, ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसी? आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊं तो प्लस से माइनस की तरफ और माइनस से निकलकर प्लस की तरफ, ऐसी। ये इसकी फील्ड बन जाएगी, ये लाल वाली फील्ड भी बन जाएगी, लाल वाली फील्ड भी बन जाएगी, जो भी पिंक कलर है, पिंक कलर की फील्ड भी ऐसे बन जाएगी। ये ऐसे निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की तरफ, और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से, यहां पे निगेटिव की तरफ एंटर करता हुआ, निगेटिव की तरफ एंटर करता हुआ और पॉजिटिव से निकलता हुआ, ये ऐसे पॉजिटिव से निकलता हुआ, ये पॉजिटिव से निकलता, निगेटिव में एंटर करता हुआ। तो आपको अब पूरी दुनिया में, दो आपको क्या पता कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? भाई तुम अपना चार्ज लेके आए, गेस्ट लेके, कि भैया जाओ देखो तुम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये थोड़ी बता पाएगा कि मुझे पीली वाले ने इतना लगाया, लाल वाले ने इतना लगाया, वो तो मेरे ऊपर नेट फोर्स इतना लगा। तो अगर आप नोटिस करें तो बीच के मीडियम में उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पीली वाली जो थी वो राइट साइड थी, लाल वाली लेफ्ट साइड थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में कम हो गई, कम हो गई। और अगर आप मोटा मोटा यहां देखें तो यहां पे पीली वाली भी अंदर की तरफ थी और लाल वाली भी अंदर की तरफ थी, यहां बढ़ गई। तो कई जगह पर बाहर की दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, अंदर लेकिन वन थिंग आई एम श्योर अबाउट, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है।
तो जब कोई गेस्ट आएगा, यहां रहेगा, तो बिना मीडियम के उस पर जो फोर्स लग रहा था उससे ज्यादा लगेगा, और जब कोई गेस्ट यहां आएगा तो बिना मीडियम के जो उस पर फोर्स लग रहा था उससे थोड़ा फोर्स कम लगेगा। तो दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। अब कई लोगों को लगता है कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वन थिंग आई एम श्योर कि इट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड, तो उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कम कर देता है, पर बाहर बढ़ भी सकती है। तो कोई गेस्ट आता है तो इट मे एक्सपीरियंस मोर फोर्स आउटसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक एंड मे एक्सपीरियंस लेस फोर्स इनसाइड दिस। तो अब इस चीज को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन कितना हो रहा है, वो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसीलिए एक वर्ड डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी को आप ऐसे समझिए, अंग्रेजी का शब्द परमिट, जितना जो ज्यादा पोलराइजेशन को परमिट करेगा उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इफ यू आर परमिटिंग मोर, यू हैव मोर परमिटिविटी। इफ यू आर परमिटिंग लेस, यू हैव लेस परमिटिविटी। यानी जितना ज्यादा आप परमिट करेंगे उतनी ज्यादा परमिटिविटी होगी पोलराइजेशन को जितना परमिट करेंगे। फील्ड इज अ मैथमेटिकल टर्म। मैंने कहा हाँ ठीक, इसका कोई फील होता है क्या? बेटा, यू हैव नेवर फेल्ट फोर्स ऑल्सो। अगर आप फीलिंग की बात करें, ह्यूमन, हमारा जो दिमाग है, हमें फोर्स भी फील नहीं होता, हमें फोर्स फील नहीं होता, हमें उसका इफेक्ट फील। हमारी फीलिंग की एक लिमिटेशन है मेरे बेटा। फीलिंग को अगर आप मेंटल फीलिंग, यानी आप कितना सोच पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उस तरह से फीलिंग को डिफाइन करेंगे, देन ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग वी कैन फील इट, कि हाँ इट हैज अ वर्च्यू। बट इफ यू लिटरली फील, ट्राइंग टू फील विद द फाइव सेंसेस, देन इट इज अ डिफिकल्ट जॉब बेटा। तो दिस हैपेंस हियर। तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए सराउंडिंग जो हमारे पास है वो ऑमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह प्रेजेंट है, सराउंडिंग हर जगह प्रेजेंट है। अगर सराउंडिंग हर जगह प्रेजेंट होगी, अगर सराउंडिंग हर जगह प्रेजेंट होगी, हर जगह प्रेजेंट होगी, अगर सराउंडिंग हर जगह प्रेजेंट होगी, तो वन थिंग आई एम श्योर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कम हो जाएगी, क्योंकि एक चीज पे हम और आप मान गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कम हो जाती है, बाहर बढ़ भी सकती है। तो उस बंदे ने कहा कि इफ सराउंडिंग इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी ओमनी प्रेजेंट मतलब सराउंडिंग इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि फील्ड हर मीडियम हर जगह, पानी हर जगह भरा हुआ, तब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह नेट कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह नेट कम हो जाएगी। और उसी से उसने एक टर्म डिफाइन किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, की ई विदाउट डिवाइड बाई के इज इक्वल टू ई विद डाइलेक्ट, विद ओमनी प्रेजेंट डाइलेक्ट, ओमनी प्रेजेंट डाइलेक्ट हर जगह कम हो जाएगी तब। लेकिन ये सिर्फ तब सही है भाइयों और बहनों, जब हमारा मीडियम हर जगह अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, तब हम कहते हैं कि के टाइम्स कम हो जाती है। इस के का दूसरा नाम भी है, इट इज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। और के की वैल्यू एक से ज्यादा ही होती है, एक होती है जब कोई मीडियम ना हो। अच्छा, एक और बात, इसमें एक और टर्म आता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे बेटा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक यहां पर हमारे पास है, लेट्स से कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है,
आपने इस डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है यहां 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 यहां, ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। इसमें जब पोलराइजेशन होगा तो होगा, थोड़ा इधर उधर जाएंगे। आपको बताया था मैंने कि न्यूक्लियस यहां पर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगेगा। हमने और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अगर हमने और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दी, तो ये न्यूक्लियस यहां पर, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। हमने और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन पे और फोर्स लगा, बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाएगा, न्यूक्लियस को ऑर्बिट छोड़कर फ्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक बिकम कंडक्टिंग। Why dielectric become conducting? Because हमने इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, ईदर इट इज वायरस और नॉट आई एम बंगाली की कोरोना बोल रहा हूं, कोरोना को कोरोना डिस्चार्ज। तो ये कोरोना डिस्चार्ज यहां पे हो जाता है, इसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। वही कारण है हमारी बिजली जब गिरती है तो हमारी हवा से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, चार्ज मूव करते हैं, जबकि हवा डाइलेक्ट्रिक है। व्हाई दे मूव थ्रू हवा? बिकॉज वो बादलों के पास इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि वो हवा को पोलराइज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। क्या बात कर रहे थे हम? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी वर टॉकिंग अबाउट कि कंडक्टर में क्या हुआ। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, तो जब कंडक्टर में बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो इलेक्ट्रॉन में पोलराइजेशन नहीं होता, वो तो खुला है, भागता है, इलेक्ट्रॉन भागता है। इसीलिए वर्ड्स अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टर में जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉन कंडक्टर में हम उस चीज को कहते हैं पोलराइजेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, भागता है, भागता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग भाग कर कोनों पर सरफेस पे आकर इकट्ठा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठा होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाती है। अब आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज की कमी आती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन जाती है, और तब तक ये होता रहता है जब तक इलेक्ट्रॉन यहां पर हरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाल वाली से मजबूत होगी, इलेक्ट्रॉन इधर भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। हरी वाली लाल वाली से मजबूत होगी तो इलेक्ट्रॉन भागता रहेगा। तो एक समय जब इलेक्ट्रॉन ने भागना बंद कर दिया और इलेक्ट्रॉन सारा कोने पे आ गया है, इलेक्ट्रॉन सारा कोने पे आ गया है, तो हम कहते हैं कि नाउ ई नेट बिकम जीरो, ई नेट बिकम जीरो। क्योंकि चार्ज ने, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स होता तो सारा चलता रहता। अगर वो रुक गया है, शुभ बिल्कुल अपनी पढ़ाई कर बेटा, अच्छे से बोर्ड का जो तेरा स्कूल का सिलेबस है उसको पहले अच्छे से कंप्लीट कर, उसको कंप्लीट कर ले कि अब मेरा सब कुछ कंप्लीट है। भागा भागी मत कर कि आगे आगे का पढ़ लें, पहले 10th का ऐसे कर ले कि साला कोई तुझसे पूछे कहीं से कोई सवाल तू यूं बता दे, फिर तू 11वीं के पढ़ने की तैयारी कर। अगर तू 10th की चीजों में फंसता है, रुकता है, परेशान होता है, कंफ्यूज होता है, तो 11वीं का आगे बढ़ बढ़कर पढ़ना मूर्खता कहलाएगी। उस मूर्खता को हमें नहीं करना है, हमें बढ़ बढ़कर आगे नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ई नेट जीरो हो जाता है, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। तो ये हमारा चार्ज ने चलना बंद कर दिया, तो हमें कंडक्टर के बारे में सिर्फ तीन बातें पता है। पहला, कंडक्टर में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज विल लाई ऑन सरफेस ओनली, लाई ऑन सरफेस, कभी भी अंदर चार्ज नहीं हो सकता। दूसरा, प्रूव कर सकते हैं हम आसानी से, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूव कर दूंगा। दूसरा, ई नेट इक्वल टू जीरो इनसाइड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट। ये क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट क्या बोल रहा हूं?
इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट क्या बोल रहा हूं? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट का मतलब हुआ कि चार्ज ने चलना रुक गया, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जब हो रहा था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी। जब चार्ज ने चलना बंद कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन अब चलना बंद कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट आ गई। तीसरा, सरफेस द होल कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, सवाल करेंगे तो समझ में आएगा, अभी हम सवाल करना स्टार्ट करने वाले। होल कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कंडक्टर के बारे में आपको पता होनी। इसके अलावा दो छोटी छोटी बातें और हमें पता होनी चाहिए। चौथी, जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये कंडक्टर है, चार्ज डेंसिटी अलग अलग हर जगह, यहां की अगर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां की चार्ज डेंसिटी पता है उसके जस्ट बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, perpendicular to surface. And last, electrostatic pressure ये फील करेगा सरफेस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर ऑन सरफेस। अब उसके बाद अलग अलग तरह के सवाल है, अब सवाल से ही खेल स्टार्ट करते हैं। सवाल से खेल स्टार्ट करते हैं। कोई भी सवाल यहां रोक दिया, ये सवाल करते हैं। अब सवाल खेलते हैं। सवाल से हमें चीजें सीखने को ज्यादा अच्छी मिलेंगी। सवाल कह रहा है, शोन इन द फिगर इज अ शेल made of conductor. It has inner radius A and outer radius B and carries charge at its center. Its center is a dipole. अच्छा, carries charge, ठीक है। Figure is a shell made of a conductor. It has inner radius A and outer radius B. के पास चार्ज भी है। अच्छा भैया, चार्ज भी है। Q होगा शायद, Q नीचे लिखा हुआ है, और सेंटर पे एक डाइपोल रखा हुआ है। पूछते हैं, अब सेंटर पे डाइपोल रखा हुआ है तो चाहे यानी अंदर इसके टोटल चार्ज निगेटिव है तो इसके इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इनर सरफेस पे टोटल चार्ज हमेशा जो फ्री चार्ज रखा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट होता है, तो टोटल चार्ज इस केस में 0 होने वाला है। जो भी चार्ज इसके ऊपर है सब आउटर सरफेस पे होगा, और आउटर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन इनर असिमेट्री से फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिफॉर्म होगा। ये सिर्फ तभी बदल सकता है जब बाहर कोई हिंड्रेंस पैदा करे, तो बाहर का आउटर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, अंदर इनर सरफेस पे चार्ज 0 होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा पर 0 होगा। देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। करेक्ट, जो करेक्ट है पहले ही है, चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल, बिल्कुल सही, क्योंकि आउटर शेल पे मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई डाउट हो पूछना। दूसरा क्या बोल रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस ऑफ द शेल इज 0 एवरीवेयर। गलत। वो बढ़िया सवाल आया था यार, जेईई मेंस 2019 का, मेरे तो अच्छा सवाल आया था। अच्छा, 19 में तो पेपर अच्छे बनते थे यार, 19 में तो पेपर अच्छे बनते थे। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मैंने बोला था कि इनर सरफेस पे टोटल चार्ज 0 होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा किसी के पिताजी नहीं बता सकते, होगा तो जरूर क्योंकि डाइपोल रखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म। गलत। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन P। गलत। ए इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरे कहानी बहुत, एक सवाल से बहुत सीखने को मिल गया भैया। अगला क्या सवाल है, A solid metal sphere of radius r having charge q
is enclosed inside the concentric spherical shell of inner radius A and outer radius B. The approximate variation of electric field E as a function of distance R from the center O is given by. बहुत बढ़िया. तो अगर आपका ये जो अंदर वाला स्फीयर है, इस पे Q चार्ज दिया है, तो सारा इसकी आउटर सरफेस पे आएगा, आउटर सरफेस पे आएगा, और इसके इधर उतना ही सिमेट्रिकली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके इधर उतना ही पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा. यहां पर पॉजिटिव चार्ज. मीट में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यानी कि पहले जीरो से ए तक, बी है क्या है, जो भी है, इनर रेडियस ए, जीरो से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं, जीरो से ए तक जीरो होगी. ए से बी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाय द फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर. ए से बी तक, बी से सी तक जो भी है उसके आगे, वहां पर फिर से जीरो होगी, और फिर इसी के बाद इसी कर्व को कंटिन्यू करेगी, यानी कुछ ऐसी हो, कुछ ऐसी होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वेयर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होने वाली है. क्या होगा? ए से बी में मेटल है, अरे इनसाइड द कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ इलेक्ट्रिक, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, उसको ये नहीं बताया है कि ये मेटल है कि नहीं है. अगर ये मेटल नहीं है तो इसके रहने न रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही रहने वाली, अगर ये मेटल नहीं है, अगर ये मेटल नहीं है. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके. ये फालतू सवाल है, कुछ अच्छा सवाल ये पढ़ते भैया. टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स pairs with negligible volume have this much and this much charges respectively. They are brought into contact and then separated by a distance of 0.5 meter. उनको कांटेक्ट में लाया गया और फिर उनको 0.5 इलेक्ट्रिक फोर्स है. बड़ा घटिया सवाल है. दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, तो अगर जब भी उनको पास में चिपकाया जाएगा तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बराबर बराबर कर लेंगे. तो टोटल चार्ज अगर आपको पता है 2.1 और -0.9 है, इसका मतलब टोटल चार्ज 2 नैनो कूलम है, तो एक पे 1 और एक पे 1 हो जाएगा, और छोटे हैं और फिर इनको दूरी पे रख दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को इफेक्ट नहीं मानेंगे और इनको पॉइंट चार्ज मानकर के Q1 Q2 बाई के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल लेंगे. घटिया सवाल था, कुछ भी नहीं था, मैं नहीं करूंगा. Given below are the two statements. Electric potential is constant within and at the surface of each conductor. बिल्कुल सही है. Electric potential is constant, same रहता है, ये बिल्कुल सही है. Electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of conductor at every point. सही है. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given. तो इसका आंसर गिवन मेरा, मैं अगर करता तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट रीजन. बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट रीजन, बिकॉज सरफेस के सब इक्विपोटेंशियल हो गए, और वो बोल रहा है अंदर भी इक्विपोटेंशियल है, तो अंदर तो इक्विपोटेंशियल. टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर व्हेन प्लेस्ड at certain distance in air repel each other with a force of F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with and finally placed at midpoint between the spheres A and B. The force experienced by sphere C will be, ये देखो ये इसमें क्या है ना, है तो कंडक्टर का, पर ये मान के चल रहा है कि इसको एक चीज और लिखनी है, स्मॉल कंडक्टर. स्मॉल ने लिखा तो सब गड़बड़ हो जाती. तो मैंने कहा आइडेंटिकल मेटल स्फीयर प्लेस्ड, आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं ये दोनों, तो इनके ऊपर क्यू क्यू का चार्ज था, क्यू क्यू का चार्ज था. तो क्यू क्यू का चार्ज था, तो उसने पहले एक्सप्रेशन दी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू उसने बोला एफ है. अब उसने कहा कि तीसरा कंडक्टर लाया, पहले वो सी से टच कराया, सी से टच कराया तो इस पे क्यू बाई टू हो गया, और उस पे सी ए ये था, सी पे भी क्यू बाई टू हो गया. फिर क्यू बाई टू को इससे टच कराया तो दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब है इस पर 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और उस पर भी 3/4 हो जाएगा, उस पर भी 3/4 हो जाएगा. अब उसको बीच में रख दिया, बीच में रख दिया तो इधर है Q/2, ये है 3Q/4 और ये है 3Q/4. अब हमें क्या निकालना है,
A and B, the force मैंने स्फीयर C, स्फीयर C का फोर्स निकालिए, इसके ऊपर कितना फोर्स, तो इसके ऊपर ये लगाएगा इधर की तरफ, ये लगाएगा इधर की तरफ, कितना कितना फोर्स लगाएगा देखते हैं। तो K3Q/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर माइनस KQ/2/4 इंटू R/2 का होल स्क्वायर, ये फोर्स होगा। तो ये आ गया हमारे पास K3Q/4 इंटू Q/4 अपॉन R²/4, 4 कैंसिल, ये आ गया 3/4F। B is the answer. B is the answer. This is how we can find out the answer of these. This is how we can find out answer of this question. एक और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, और कोई फोटो वोटो वाला सवाल हो। ये कोई सवाल लग रहा है, ये क्या सवाल है भैया, ये पढ़ लेते हैं। 2020 का सवाल है, क्या है सवाल देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर, गेस्ट मतलब समझ गए ना, गेस्ट मतलब इसमें फोर्स के अलावा मैकेनिक्स भी लगेगी, थोड़ी मैकेनिक्स भी लगेगी इस सवाल में। उस दिन कोर्स फ्री कर दूंगा, या फिर आपसे पैसे लेके उनके पैसे वापस कर दूंगा जिन्होंने ज्यादा दिया है और सबके बराबर कर दूंगा। A solid sphere of radius r carries charge q plus q distributed uniformly over its volume. A very small point like piece of mass m gets detached from the bottom of the sphere and falls down vertically under gravity. ठीक है, this piece carries charge q. If it acquires speed v when it has fallen through a vertical height y. ये तो बहुत आसान सवाल है यार। ये q चार्ज जो है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r के चार्ज q plus q distributed uniformly over its volume, get detached from the bottom of the sphere and falls down. बड़ा गंदा लिखा है यार, किसने बनाया है ये सवाल, पढ़ मारने का मतलब गंदगी। आप बताओ क्या है इसमें, सवाल गलत क्या लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है गलत है आपको, कुछ गलती लग रही है इसमें, गलती लग रही है। एक तो चार्ज q प्लस q डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पार्टिकल के ऊपर q चार्ज आएगा, कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, q का एक पार्टिकल लगा होगा, ये होगा भैया, कैपिटल Q यूनिफॉर्मली होगा, स्मॉल q का पार्टिकल लगा होगा। तो कैपिटल Q यहां पर यूनिफॉर्मली था, ये स्मॉल q यहां से y डिस्टेंस नीचे आया, यहां पर इसकी वेलोसिटी मान ली v है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgy, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgy। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है q टाइम्स vi माइनस vf, which is kq by r minus kq upon r plus y is equal to half mv square। खत्म हो गया सवाल, that's it, फालतू सवाल था। ये क्या बोल रहा है, two electron each are fixed at a distance 2d, a third charge proton placed at the midpoint is displaced slightly by a distance x is perpendicular to the line joining the two fixed charges. Protons will execute simple harmonic motion having angular frequency m। कर लेना सवाल। तो दिस इज द वे यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा, सवाल कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आप कोशिश करिएगा सवालों करने के लिए, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज तो सब कुछ बता ही दिया आपको, ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे सवाल, हो जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे जीवन में। कैपेसिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन IIT JEE मेंस एग्जामिनेशन। कैपेसिटर पे सवाल कैसे आएंगे, हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, वी हैव टू लर्न टुडे इन दिस क्लास। So we'll go through the capacitor knowledge briefly and see what kind of questions will be there, what kind of concept you have to apply, and what are the core crux of the capacitor, what you need to remember, and so that you can solve each and every question. So if I talk about capacitor here, capacitor hota kya hai? What is capacitor? Capacitor is a device which store electrical energy. This is the only purpose of capacitor. Initial purpose of capacitor was to store, making a device to store energy. Making a device to store energy, and it should not affect the outside surrounding also. We know the energy of
any charge system is stored in its electric field. हमें ये पता है. The first thing you have to write, you keep writing these things because this will make you short notes, and whenever you're going to solve question, you have to solve question on the basis of the notes given here in this class. So just write it there, just write it to understand, and believe me, every question you can solve by reading these points whatever I'm going to write here. So point number one जो आपको समझ में आना चाहिए, that is electrostatic energy. Electrostatic energy is stored in electric field. Electrostatic energy is stored in electric field. In electric field. Whenever somebody says ki where, for example, you have a charged sphere, it has an energy kq square by 2r. In electrostatics we have studied actually kq square by 2r. Where this energy is stored? This energy is stored in its electric field. Wherever the electric field is present, its energy is stored. And we know the formula is energy density is equal to half epsilon naught E square. Energy density. Energy density means energy per unit volume. Energy per unit volume at any point you can find out by the formula half epsilon naught E square. So wherever the electric field is more, you can say the electric field is more, energy is more concentrated at that point. It is the concentration of energy. Half epsilon naught E square is the concentration of energy. Where the energy is more densely stored, where the energy is lightly stored, the concentration of energy is given by half epsilon naught E square. And if somebody is asking, for example, there is a point charge Q here, and somebody is asking, yahan at this point, or at A point and at B point, where energy is more concentrated. So what is the answer in this case? Energy ka concentration zyada kahan hai? Where the concentration of energy is more? What is the answer in this case? A, of course. A, of course. Why A? Because the electric field is more, energy concentration is more. And now the second type of question which will be asked, calculate the energy stored in this particular volume. They will ask you to find out energy stored in this particular volume. Then how to solve that energy stored in a particular volume? Then obviously we can find out energy stored in a particular volume by this. This is energy stored per unit volume. So energy stored in dV volume will be half epsilon naught E square dV. Half epsilon naught E square dV. This is the energy stored in small dV volume. This is the energy stored in small dV volume. If he says you find out the energy stored from here to there, then you have to integrate this energy, you have to add this energy of small volume of this part, small volume of this part, small volume of this part. Yani U is always defined as half epsilon naught E square dV ka integration. This is the formula you have to understand. Whenever somebody, this is a one kind of question which is generally asked, find out the energy stored in this volume. For example, I'll take an example to understand this, but you have to remember this formula, how to find out energy stored. For example, there is a point charge Q, and they say if you go at a distance R and you make a sphere, and you go at a distance 2R and make a sphere, they say what is the energy stored in this volume? In this volume, what is the amount of energy stored? How will you calculate the amount of energy stored in any given volume? If somebody asks in any question, such kind of question that find out the energy stored in this particular volume, then what you have to do? You say, I know the sir, answer is U is equal to integral half epsilon naught E square dV. Half epsilon naught E square dV. Please check kariye. Is it right? The first line will be half epsilon naught E square dV. Is it right? The first line you have to write the energy stored is this much. Now you have to integrate it. Then you have to understand what is E and what is dV. Then only you can get the answer. So if you see, yahan se x distance pe if I go, then is the electric field same at every point? Is on this white sphere? Is this electric field same at every point at the white sphere? And you just assume a small dx element of this. Small dx element of this. In this dx element, in this element, this small element, can I say the energy stored, electric field is almost same at every point? Can I say by changing dx distance, electric field is not changed very much? So can I assume it is constant in this small element? Absolutely. Then for that you have to write E is equal to kq by x square. And if you write down the volume of this white element, volume of this white element,
तो व्हाइट एलिमेंट की चौड़ाई जो है, इसका विड्थ जो है, द विड्थ इज dx, the width of this volume element is dx, and the area is 4 pi x square. Can you see the area of this sphere is 4 pi x square? Yes. So the volume of this small element dv is can be written as 4 pi x square area into chaudai, which is dx, and dv is this much. You just have to put E is this, dv is this, and integrate from r to 2r, you get the answer. Did you get that? Can you solve these kind of question? The first type of question, this is what we have to study. We will see what type of questions will be there in the exam, and we know how to solve each and every type of question. This is the first type of question they will ask, and you understand that this is the way we can solve this question. Am I clear? Perfect. Perfect. This is the first type of question. Now, we are going to talk about capacitor. I said capacitor is the energy storing device. Capacitor is the energy storing device. As well as it must store energy, and at the time when we need this energy, it must be in the usable form. Otherwise, there is no benefit of storing energy. For example, you store money, and whenever you need that money, you cannot use that money. Then obviously this stored money is of no use. Why we store money? Why we save money? Why somebody save money? Save money so that whenever I need it, I can use this money, isn't it? For example, you have bought a plot, and at the time when you need money, it is not possible to sell that plot. Then obviously this saved money is of no use at that particular time. So what we want to store energy, and we want to store energy in a form that we can use it whenever we want. So for example, if there is a non-conducting thing. There is a non-conducting thing, for example, and you give charge to this. You give charge to this. आपने इसको charge दे दिया. You just tell me, Abhinav, कि will there be electric field around it? The electric field will around it. So will there be potential energy this system will have? Will the potential energy this system is having some potential energy? The system will have potential energy, but now you have, for example, whenever you have energy, you have power, you just collected charges from other different positions and just put it there in this non-conducting thing, and you stored energy. Now you said that, sir, I have a lot of stored energy which is with the charge. मैंने कहा okay, now sometime you need this energy. आपने कहा कि मुझे energy चाहिए, and now you want to use this energy. And then you said कि you are going to use this energy, but you don't have any way out to use this energy. How will you use this energy, stored energy? You cannot use this energy, because energy will be used whenever charge will flow. Because in current electricity, we know whenever charge will flow, it will lose energy. But in non-conducting things, it is not possible to flow the charge. So obviously you have stored this energy, but it is of no use. Because whenever you need this energy, you cannot use it, because the charge will not flow by itself. If it is not flowing, then it is not losing energy. If it is not losing energy, we are not using this energy. So I thought that this is not a good idea. We thought that we should give this charge to conductor. Why we should give this charge to conductor? Because it will also store energy, and whenever we need this energy, what we just need to do, you just use a wire and connect it to earth. For example, if you just use this wire and connect to the earth, as you connect to the earth, charge will flow from this conductor to earth, and as the charge flow, it will lose its energy. दुनिया में any phenomena which is happening by itself is losing its energy. For example, if you know or you don't know any phenomena, and somebody is asking why this phenomena is happening, you just give the answer without thinking to decrease its potential energy. For example, if I leave this pen here, if I leave this pen here and it falls down, somebody asks why it falls down. You have no clue of gravitation, for example, and you'll say to decrease its potential energy. If suppose somebody asks why the charge is flowing, to decrease its potential energy. So obviously, when conductor has a possibility of flowing charge, so as you connect it with earth, charge will flow from conductor to earth, and it will lose its energy. And when it loses energy, we are going to use it. So we have energy, and we are capable of using this energy whenever we need it. So it is this energy of usable form. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? So what does that mean? कि whenever you need to store energy, you have to store energy in form of charge on conductor. In form of charge
on conductor. The first thing, capacitor must be made of conductor. The first thing. Another thing, another problem. For example, you have stored the charge on this. You have stored the charge on this conductor. Will there be electric field here? Will there be any electric field here at that point? Yes. So there will be some electric field at that point, beta. You have stored energy. You have kept this charge sphere in your almirah and close that window. I have stored energy, but its electric field is everywhere in the space. Everywhere in the space. So whenever you are doing something else, for example, this is stored in a box और आपने कहा कि मेरे पास energy store रखी हुई है, and you are doing some experiment here, and when you are doing some experiment here, its electric field will be here, and it is disturbing you. It is disturbing you. It is changing everything for you because there is some electric field. It is displacing the charge. It is applying the force on charge particle. It is disturbing everything, isn't it? So what do you want? What do you want? I want to store energy in form of conductor, but another constraint you come up with, it should not disturb others. It means its electric field should not come outside of this. Otherwise, it will disturb everybody else. It will disturb everybody else. It will disturb other experimental setups. It will disturb other devices. So I want to store energy, but I want this stored energy should not disturb. First rule was I can use it anywhere. For that you need conductor. The second condition was that it should not disturb you. So what do you want? It should not disturb you. It means its electric field should not be outside this box. Otherwise it will disturb everything. So to remove this problem, what we did, we make a conductor, we make another conductor, and we gave it plus Q charge and we gave it minus Q charge. If we make it so, the electric field will be here only, plus Q2 minus Q, plus Q2 minus Q only, and there will be no electric field outside. Electric field outside will be zero. You can use it by Gauss law. Electric field outside will be zero. So what is happening? Can you use this plus Q and minus Q device whenever you need energy? How to use that? You just need to add a wire from here to here. If you add a wire from here to here, as you close the switch, charge will flow from higher potential to lower potential, lose energy, we will use energy. Is it disturbing others? No. So is it the complete thing what we are looking for? That's why we say capacitor must be made of conductor and it must have two facing surfaces carrying equal and opposite charge. Why it should carry equal and opposite charge? Electric field is confined within the space only. It will not disturb outside world. There will be no electric field outside. So obviously this is a device with stored energy and it is not interfering others. So this is the complete definition of capacitor. So whenever you see two surfaces facing each other having equal and opposite charge, you can say this is a capacitor. And अगर मैं charge की बात ना करूं, सिर्फ device की बात करूं, तो what we need to say, it must have two surfaces, two conducting surfaces facing each other. So any device like this, for example, there is a conductor of this shape, there is a conductor of this shape. So this arrangement is a capacitor. Shape is कैसा भी हो shape, कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter what is the shape, but there must be two facing surfaces. One surface is this, one surface is this. This is S1, this is S2. The whole system is called capacitor. So we have some standard one. Number one is called parallel plate capacitor, in which two parallel surfaces, this and this is there. Number two is spherical capacitor. This two surfaces, this and this is there. Number three is called cylindrical capacitor. This two surfaces are there. So these are three standard one, but capacitor can be of any shape and size. Capacitor can be of any shape and size. क्या दोनों surfaces का shape and size same होना जरूरी है? Is it necessary that both surfaces must have same shape? Absolutely not. So you got the idea. They must be facing each other. Just to make sure that whenever I'm going to give charge to it, I'll give one plate positive, one negative. Which positive, which negative is not necessary. One positive, one negative. You can give this plate positive, this plate negative. You can give this positive, this negative. Similarly, positive, negative or negative, positive. Whatever you want, you can give. But
by making this arrangement, we are sure that whenever we need to use this energy, how will you use the energy of capacitor? By connecting the plate. And is it disturbing others? So you got the idea of capacitor. Capacitor is an energy storing device made of conductors which consist of two surfaces facing each other. This capacitor can store energy, and whenever we need this energy, we can use it by joining these two plates. As this capacitor in stored energy, when it has stored energy, it does not disturb others. So you got the complete definition of capacitor. Perfect? Good. Now, there are two things we define. Number one is called capacitance. Capacitance word is very close to capacity, and sometimes in old textbook, they write it capacity also. But this capacity gives a wrong impression on us. We think this is the maximum something. Maximum of something it can have is called capacity. It gives the sense now. For example, I say the capacity of a tank is 500 liter. Then you understand that this tank cannot have water more than 500 liter, or you can say it can have water up to 500 liter. But this capacity is not exactly the capacity. That's why later, initially the name was capacity used, and later the name capacitance was used because it was giving wrong impression. What does capacitance means? They say whenever, for example, you take any capacitor, this is capacitor. Whenever you going to give charge to this capacitor, how will you give charge to the capacitor? What you will do? What is the way to give charge? That is a mechanical way. This is the experimental way. You are going to give charge. Well, what is the condition of giving charge? Does it mean you can give charge to one of the plate? You have, whenever you say the charge on capacitor, the capacitor is charged, that means you have to give one plate plus Q, another minus Q. What is the total charge? What is the net charge you have given? Zero, of course. The net charge given by you is absolutely zero, but obviously everybody knows that net charge is always zero. So whenever somebody asks what is the charge on capacitor, that doesn't mean tell me the net charge on the capacitor. They ask what is the amount of charge on any of the plate. So whenever somebody says what is the charge on capacitor, they ask what is the amount of charge on any of the plate. So for example, आपने इसको plus Q और इसको minus Q दिया, then you will say charge on capacitor is Q. Charge on capacitor is Q. So what capacitance suggests? Capacitance suggests that whenever you give charge, the electric field within the space will increase. If you increase the charge, the electric field within the space increase. If electric field will increase, the potential difference will increase. Yes, the potential difference between them will increase, and potential difference is very useful cheese. Potential difference is very, very useful. Why? Because this is a very important thing. You have to write that whenever a charge Q goes through a potential difference delta V, the work done on Q will be Q delta V. Whenever a charge Q goes through a potential difference delta V, the work done on this will be Q delta V, because there are a lot of questions will be based on this. So whenever you need to know how much work this stored system can do, how much energy it has, then you need to know the potential difference. And for calculating potential difference, what we have observed, if when you give charge, it will create electric field, and if it will create electric field, it will create a potential difference, which is very useful to us. So capacitance of a capacitor says that the potential difference caused between two plates is proportional to charge given. It means Q is proportional to delta V. Q and delta V are proportional to each other. To remove this proportionality sign, we introduce a constant, and this constant is called capacitance. Q is equal to C delta V.
delta V. This constant is called capacitance, and capacitance depends on shape, size, and medium in between. Medium in between. Because we know if you put dielectric inside, the net electric field will decrease. The net electric field will decrease, so net potential difference will decrease. Are you following me? So Q is equal to C delta V. So C can be written as C is equal to Q by delta V. तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? इसका यूनिट कूलॉम पर वोल्ट, and we call it new name Farad. We call it Farad. So C, कभी भी किसी का C निकालना होगा, वैसे तो हमें याद होंगे, पर कभी भी किसी का C निकालना होगा अननोन स्ट्रक्चर का, अननोन कैपेसिटर का, you just need to assume charge Q on this and find out potential difference, and Q by delta V is the answer. So C is the property of the structure, shape, size, and medium in between. That's it. Capacitance depends only on these three things: shape, size, and medium in between. And if you give charge, it will have potential difference, and potential difference and charge are related by the relation Q is equal to C delta V. C is the property of structure. For example, we must know if it is a parallel plate capacitor, its C is equal to A epsilon naught by D. If we have a capacitor, spherical capacitor with R1 radius and R2 radius, C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1. But this is the two capacitance you have to remember. These are the two capacitance you have to remember. You just need to remember these two formulas. C is equal to A epsilon naught by D. C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1. And if any question will come where you need to find out capacitance, the standard method to solve that question is that JEE Mains में नहीं आएगा ऐसा नया सवाल. You have to find out capacitance for a new kind of shape and size. It may come in JEE Advanced, but अभी हम उस पे focus नहीं करते हैं. अभी हम focus करते हैं कि what will come in JEE Mains. Because first step is JEE Mains. If we clear JEE Mains, then we'll be at a level. Then we'll go for the higher one. So first of all, you have to remember these two formula. C is equal to epsilon naught by D. So I'll recap everything whatever we have studied till now. What does the charge on capacitor mean? For example, we have two plates. For example, it has given Q charge, it has given 3Q charge. If somebody asks, what is the charge on capacitor in this case? What is the charge on capacitor in this case? For that, we have to divide these charges. Whenever multiple surfaces, plates are there, for example, this carries Q, this carries 3Q, this carries 5Q, this carries minus 7Q, for example, this carries 9Q, this carries 11Q. Suppose these kind of charges are there. Then there is a kind of question which comes कि distribute charges on which surface what amount of charge will be there. So rule hai, because we don't have time to explain the derivation of that rule, we just remember that rule. Because every bit we are learning will be useful there. So obviously this is the thing, we have to at least understand what to do. What do you have to do? Whenever somebody asks to distribute charge, what do you have to do? You just need to add up all charges. So what you have to do, the first step will be, the total charge will be equally divided on outer surfaces. It means, what do you have to do? You have to say, ki here the charge is 11Q, here the charge is 11Q. Making sense? Is it clear, the first step? Perfect. The charge on the leftmost and rightmost will be equal, and it will be half of. Now, you know 11Q is here, then total charge on this plate was Q. And obviously this plate is isolated. Charge cannot fly in air. So this plate is isolated. The total amount of charge will be Q only. So if 11Q is here, then obviously to make the total charge Q, the charge on this surface will be minus 10Q. Charge on this surface will be minus 10Q. Am I making sense? And another thing you have to remember, that facing surfaces will have equal and opposite charge.
Facing surfaces will have equal and opposite charge. So if it is minus 10q, this surface will have 10q. This surface will have 10q. So can you tell me what is the charge on the right surface of the second plate? Minus 7q plus 7q. Now tell me, I am your clerk now. Just tell me. Whatever you tell, I'll write. Minus 2q plus 2q. Here. बहुत ही बढ़िया. Minus 9q plus 9q. 0. 0. That's it. So this is a way of distributing charges. And another thing they may ask, obviously, ये भी मैं यही बता देता हूँ. Another thing they will ask, कि find out electric field at every point. They can ask you to write down electric field. So whenever this kind of system is there and they want you to write down the electric field, what you have to do first thing is do the charge distribution. And the second thing is very simple. For example, they will ask you electric field at A point. Just you have to see the nearest possible charge to A. What is the nearest possible charge to A? 11q. So the electric field will be 11q upon A epsilon naught. As simple as that. The nearest possible charge will be 11q upon A epsilon naught. And direction, it will be always away from positive towards negative. So 11q is a positive charge. So direction will be this way. So this is the electric field you got at point A. Can you tell me what is the electric field at point B? What is the amount of charge near to it? Either you see left or you see right. It is your choice. The answer will be same. What is the amount of charge? 7q. So electric field will be 7q by A epsilon naught. What is the direction I have told? Positive to negative. So direction will be this one. What is the value of charge? What is the electric field here? 9q upon A epsilon naught. Left or right? Left. Absolutely correct. 9q upon A epsilon naught. So this is the way you have learned a thing in which you know how to do the charge distribution and how to find out electric field anywhere. Can you do it? If this kind of question will be there. So, as in this previous question, I asked what is the charge on capacitor? Why I asked what is the charge on capacitor? Can you help me with the distribution? 2q, 2q. What is the charge here? Minus q plus q. So can you tell me what is the charge on capacitor, beta? Q. Absolutely correct. You got the point. Thank you very much. So this is how you can calculate charge on capacitor. The charge on capacitor is Q. If somebody asks what is the potential difference in this case, the answer is Q by C. C must be known to you. C must be given. Perfect. So I hope this part of capacitor is very clear so that I can move further. I hope it is clear. Clear hai ye baat? For example, it has 2q charge. If you earth it, it means there will be no electric field outside. Outside electric field will be 0. Outside electric field can be 0 only if the charge appearing on these surfaces has to be 0. And you know this will be half of the total charge. So you just tell me what amount of charge must flow from here to here so that total charge will become 0. This plate, you're not touching this plate. So this plate will have Q charge. If you want to make total charge 0, then you want this plate to have minus Q charge. Absolutely. And what is the amount right now before connecting it to earth? Before connecting it to earth, what is the amount of charge on the right plate? 3Q. And finally, what is the amount of charge you need? So what is the amount of charge that must flow? 4Q. So whenever you connect it with the earth, 4Q charge will flow from here. 4Q charge will flow from here. And the finally photo will be like this. It will have Q, it will have minus Q, and it is earth. There is zero charge, only electric field. Capacitor is there. There will be no effect on capacitor, only outer electric field will be 0. Because earthing means I want to make your potential 0. It means I want from your point to infinity, there must be no potential difference. And if you, for example, another thing, if it was Q and 3Q, if you use this capacitor, do you remember, Kalyani, how to use the energy of a capacitor? अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले. What is the way to use energy of a capacitor? By connecting its plates. So if you connect these two plates by a wire, then what will happen? The inner charge becomes 0 and 0, outer will be 2Q, 2Q. And in this case,
inner energy of the capacitor will be used and outer surface charge will not have any effect. Did you get? So they may ask you this kind of question. What will happen? What is the question? Let me make it very clear. For example, you have two situation Q and 3Q. Another case you have situation Q and 3Q. And third case also you have situation Q and 3Q. Q and 3Q. Now if they say if I close this switch, what will happen? Sia, Abhinav? Which charge will flow? No, 3Q will not flow. If you connect the two plates of capacitor, then the charge on capacitor will flow. So we know the distribution was 2Q minus Q plus Q and 2Q. So if you do this, Q charge will flow, and finally photo will be like this, 2Q, 2Q, 0, 0, and energy stored in capacitor will be used. Is it right? Perfect. And if they ask if you connect a switch here, earth kar diya, switch aapne earth kar diya, what will happen in this case? In this case, there will be no effect on capacitor. Outer charge will flow. It means the charge here was a 2Q minus Q plus Q, 2Q. So isme 4Q charge will flow and the situation will be like this, plus Q minus Q, 0, 0. Energy of capacitor remain intact. And similarly, if you connect this to the earth, again the outer charge will affect. So it will turn out again minus Q, Q, 0, 0. Either you can get left to the earth or you can get right to the earth. Perfect. So this is the way we can use the energy of a capacitor by connecting its two plates to each other. This is the way. And capacitance is defined as Q by delta V. It is a property of the medium, shape and size. It's a constant for a given capacitor. If I buy this capacitor for you, for example, this is a capacitor, then you'll say that in this capacitor, the capacitance is not going to change. Because capacitance is the property of this shape and size and medium in between. And general knowledge, it is also known as condenser. Common people say capacitor as condenser. You must have heard this term condenser in fan and everything. Whenever some electrician used to come to your house, they may use this kind of word, condenser. So capacitor is an energy storing device. So what you must know, if there is a capacitor of capacitance C and it has given plus Q minus Q, the potential difference, if somebody asks, the answer will be Q by C. And if they ask what is the energy stored, the answer will be Q square by 2C or half C delta V square. So this is the amount of energy they store. This is the potential difference they have. So these are the two formula you have to remember. These are the two formula. Energy stored in capacitor is Q square by 2C or half C delta V square. Energy stored is Q square by 2C or half C delta V square. For example, can I use energy's formula is U is equal to Q square by 2C. For example, look at this formula. Can I say one is called series connection. C1 and C2 are connected in series. In series connection, what we know, same charge flows, charge is same. If charge is same, then you can say U is inversely proportional to capacitance. Another is called parallel connection. When they have same potential difference, C1 and C2, they have delta V is same. Then you can say U proportional to C by this formula. So only looking at C,
You cannot tell me what is the value of U. So whenever they ask you to compare energy stored, then you must think that are they connected in series or they connected in parallel. So these kind of questions will be there. If charge is same or they are connected in series, they are connected in parallel, then you know which formula is more useful. If they are connected in series, it is good to use this formula. If they are connected in parallel, it is good to use this formula. You can use any of the formula anywhere, but it is good to use. Why I am saying good to use? Because Q is same, then obviously comparison will be easy because only C is the factor. And in series combination, you can replace them by a single capacitor, and the formula will be different, exactly opposite as in resistance. In series combination, C equivalent, 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 in series. And in parallel, C equivalent is equal to C1 plus C2. Can you remember that? Perfect. Perfect. Acha, ek information, the Farad is a very big unit. Farad is big unit. Generally, whatever capacitor you see in your lab, in your house, these capacitors will have capacitance of order of microfarad, nanofarad, matlab 10 to the power minus 6 farad, 10 to the power minus 9 farad, picofarad, 10 to the power minus 12 farad, because farad is a very big unit for capacitance. Farad is a very big unit for capacitance. Just see an example. Just see an example. For example, we have a parallel plate capacitor. What generally area will be there of the capacitor which we'll use? What do you suggest? What will be the area? The capacitor in your fan, capacitor in lab, what is the typical area you can take? I need you to guess what must be the area of that plate. The area will be just area will be of order of, let's say 25 centimeter by 5 centimeter का मैंने बहुत बड़ा लिया, इतना बड़ा होता नहीं है. Let's say I have taken a area 5 centimeter by 5 centimeter. 5 centimeter by 5 centimeter का मैंने प्लेट ले लिया, काफी बड़ा है. तो एरिया हमने ले लिया 25 into 10 to the power minus 2. What is what separation you can manage? You just want to keep them close as you want. What separation you can manage? What the minimum separation you can manage? 1-2 centimeters is large. If you know you are very good and you can manage the distance in millimeter also. Let's say you can manage ki inka separation millimeter mein aapne manage kar liya hai. Let's say D is almost 0.5 mm. 0.5 mm. बहुत बढ़िया. D अगर आप, if you increase the value of D, capacitance will decrease further. So I want to find out the maximum capacitance I can have. What I'm trying, what the maximum capacitance I can have. So I try to make the bigger area and I try to decrease the separation to maximize the capacitance so that I can see what is the maximum possible value of capacitance can we make. I get my point? That's why I'm choosing these to be very small, because the formula is epsilon naught by D. If I want it to be maximum, then A has to be maximum, D has to be minimum. So I'll try to make a maximum capacitance. So I'll try to reduce down the D as much as I can, and I want to increase the area as much as I can. And we know epsilon naught. What is the value of epsilon naught? Into 10 to the power minus 12. So it is order of 8 into 10 to the power minus 12. Isn't it? If I calculate the area, तो ये हमने कितने 25 into 4 हो गया ना, मीटर स्क्वायर में 25 into 10 minus 4 हो गया मीटर स्क्वायर में. तो हमने लिखा 25 into 10 to the power minus 4 into 8 into 10 to the power minus 12 upon 0.5 into 10 to the power minus 3. If you calculate this value, I hope you can see this is a very 10 to the power minus, here the 10 to the power is almost minus 12. So you can see it is the order of picofarad. And generally the size of capacitor you see in the lab is of this size. And even the condenser will have this size. So this size of capacitors will have capacitance of order of nanofarad, picofarad, microfarad. So in sometimes in board examination,
When you go for practicals and viva, they ask you, have you seen capacitor in your life? You will say, yes, I have seen capacitor, because this is a practical viva. Then they say, have you seen the capacitor of 1 farad? Because you have never thought about it, you will say, yes sir, I have seen the capacitor in 1 farad. If you want to make a capacitor of 1 farad, the area must be more than area of Bangalore. So how will you see this capacitor kept in your laboratory? Obviously, it is not possible. So you cannot see capacitor of 1 farad. Generally, whenever you encounter with a capacitor, it is the order of microfarad, nanofarad, picofarad, or something like that. So this is what we know till now. Capacitor is an energy storing device, and blah 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 blah. We now another thing is dielectric. When we talk about dielectric in capacitor, dielectric, please dhyan se. If I put a dielectric in a capacitor, for example, it has a capacitance C, and I put a dielectric in between, completely filled. If I put a dielectric, so this is when there is a capacitor without dielectric, there is a capacitor with dielectric. If its capacitance is C, its capacitance will be Kc. Its capacitance will be Kc. Yani what you have to remember, if whenever a capacitor is completely filled with dielectric, its capacitance become K times. Can you remember that? Its capacitance become K times. And reason is very simple, because if you put a dielectric, electric field will decrease to E by K, electric field become E by K. Then potential difference is proportional to electric field. It will also decrease to delta V by K. For the same charge, Q same diya, Q same hai. Potential difference is decreased to delta V by K. So Q by delta V become K times. So can you remember this? Whenever a capacitor is completely filled with a dielectric, its capacitance become K times. Its capacitance become K times. Okay, but another type of question will be there when it is partially filled. For example, this is a capacitor and they filled the dielectric partially, half. For example, they have filled the capacitance, a dielectric up to D by 2, and D by 2 is open. Then what do you have to do? You have to make this thing as an arrangement. See, you can see this situation as there are two capacitors connected in series. One is completely filled with dielectric, another is open. Can you see this like that? So the first capacitance will be A epsilon naught upon D by 2 times K. And another is A epsilon naught by D only. This is C1, this is C2. How they are connected? In series. So obviously, first you have to change this question of one capacitor into two capacitor and write down their individual capacitance by 2, D by 2 again. Obviously, uska separation D by 2 hoga. Now you know you have two capacitance, A epsilon naught upon D by 2, A epsilon naught by D by 2, and these two capacitors are connected in series. Then you can find out 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. This is the way you can find out the net capacitance. The another variation they can give you. They can fill upper half. For example, they will fill upper half with dielectric K and lower half is free. So what you can do? Can you see there are two capacitors like this? One is above, one is below, and it is completely filled. Its area is A by 2. Its area is A by 2. This is C1, this is C2. Can I write C1 is equal to K times A by 2 epsilon naught by D, and C2 is A by 2 epsilon naught by D. Are they in parallel? So you can find out C equivalent is equal to C1 plus C2. C equivalent is equal to C1 plus C2. But one most important thing, even JEE Mains has done mistake on this, but now they are not going to repeat the same mistake. When this kind of situation is there, suppose half is filled with K and this part is filled with something else. Let's say it is K, it is 2K, it is 3K. What is your suggestion? What is your suggestion? Even the JEE Mains has done this mistake. What they did, this kind of question, this is technically wrong.
Obviously, it is not full length course. It's a kind of fast course. So I cannot explain things because it will take at least half an hour to explain everything to you. But it is very important what GI has remembered. You have to remember also that you cannot do that because it is very enticing to use 2K and 3K in parallel and the combination with K in series. It's very enticing to do. And the JEE Mains has done the same thing before, but finally they know that this is wrongly done, but they don't have given the correct option in the 4 options. So they have to go with the wrong answer also. But now they also understand what you have to do. You just have to do first, as GS suggested, you have to break K in 2 parts. First of all, you have to assume this way. You have to assume this way. There are 4 things. K, 2K, K, 3K. Obviously, this is a way to solve this question, but this is the right way. Then what you have to do? You have to assume that the above K and 2K are in series, and the below one, K and 3K are in series, and they are in parallel. Please remember at least for some time, and when we clear JEE Mains and come back for JEE Advanced, then obviously you can ask me. Then there will be good time. If you clear JEE Mains, then you will see what we can do together. Then there will be another level of physics we will discuss, because obviously we have to complete the. First of all, I just want to make sure that you guys clear the first first threshold, first level of the exam, which is JEE Mains, and then after we can go for JEE Advanced or higher level. Okay, so this is what you have to do. K3K, K2K in series, K3K in series, and this combination are in parallel, as GS suggested. Absolutely correct. Capacitor, how to solve circuits in capacitor? Circuits in capacitor has to solve by the same method as we used to solve current in the resistance. We can use loop method, we can use nodal method. Nodal method will be easier for you, but what you have to do, in that case, we assume the current is flowing. In this case, what we'll use, the English will be only past tense and nothing more difference. You will say the charge has passed. In that case, we'll say the current is going. In that case, we'll say charge has gone. That is the only difference. And everything is same. Amount of charge incoming is equal to amount of charge outgoing. And the same equation, loop method or nodal method, you're going to solve in the same method. Let me solve one question by the loop method. Loop method, for example, or nodal method. We'll solve one question, only one question. Let's say we have 5 capacitors here. 5 capacitors here. They C, 2C, 3C, 3C, 4C. And we have a battery E. We have a battery E. We have to find out charge on each capacitor. In nodal method, what should we do? We have to assume potential of 1 point by myself. Can you help me which point I can assume? Let's name them. It's A, this is B, this is C, this is D. Any point. But from now, I'll give you advice. It is advisable to choose, because if you assume the potential at B point, you can do it. We have done the same thing. We have assumed the potential at point B to be 0. But it is an advice, not a mandatory command that you have to do. It is just an advice. It is always a good idea to assume 0 potential at the lower terminal of the battery. It is always a good idea. It makes the calculation a bit less clumsy. So it's an idea. It's an advice only. It's not literally means that negative potential will have negative smaller plate of the battery will have 0 potential. It is just an advice. So we'll follow that advice today. And because I just want to show you, it's at the potential 0, 0, 0. We have got a gain of E. It has E, 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 E. So how to write, or this point C, potential X, this is potential Y. Do you remember how to write down how we used to write equation? Do you remember how we used to write equation? Charge coming is equal to charge going. So Q is given as C delta V. And can we assume charge from any side?
at point X, can I assume charge is coming from this side is equal to charge going here and here? Or can I assume charge is coming from here, charge is coming from here, charge is going here only? Can I assume anything? You just tell me, what should I do? From where I should assume charge is coming and where it is going at a C point? From E to X and Y to X charge is coming? Okay. So as he suggested, I can assume the charge is coming from E to X and a charge is coming this way, and total charge is going this way. So we'll write, what is the amount of charge coming? What is the potential difference? E minus X. So C times E minus X is coming charge from here, C into delta V. C into E minus X is the charge coming from this side. From here to here, charge is 4C times Y minus X, and it is going here, which is 2C times X minus 0. Check it out. Is it the correct equation? Is it the correct equation? Now at point V, at point D, in the first equation, I assume charge is coming from here. The amount of charge will be E minus X, which is delta V, into capacitance, which is C, so C E minus X. Here to here, charge is Y minus X into 4C. Here to here, X minus 0 into 2C. So incoming charge is equal to outgoing charge. At point D, what should we assume? Let's say we assume charge is coming from here, charge is coming from here, and charge is coming from here. Can I assume this also? Can I assume this also? Yes. In that case, we'll say that charge is coming from three sides and going nowhere. But it doesn't matter. Whatever you assume, just write the equation for that. So charge coming from this side. Charge coming from this side will be E minus Y. Please tell me, E minus Y into 3C. And charge coming from this side, beta. Please tell me. 0 minus Y, please. Into 3C. Charge coming from this side into 4C. And this is the three incoming charges. What is the outgoing charge? 0. So we got the two equation, two unknown, we can solve it. So this is how you have to deal with the circuit analysis and steady state you can deal with. Now the most important part, one of the important part which is very important is the transition state. Transition state. Transition state kya hai? Transition state. Because we know we give charge to the capacitor with the help of battery. For example, there is a capacitor, there is a resistance, and there is a battery connected to it, and there is a switch here. There is a switch here. If you close this switch, charge will flow. Let's set any general time. Q charge minus Q charge is there, and still current is I, and this battery is E. If I apply loop law in this particular case, resistance is R. This is Q by C plus IR is equal to E. Q by C plus IR is equal to E. This is the loop law equation, and this will help us to find out charge as a function of time. But it is very important to understand how to solve this equation. Please be careful in this part. If you see this equation is, we can change this equation in differential form. We can write I is equal to dq by dt in this particular equation. I equal to dq by dt, then you understand dq by dt comes out E by R minus Q by RC. Check it out. Is it right? I just write in place of I dq by dt and replace everything towards right. Can I, if I write I in place of I, if I'll write dq by dt, will this equation turn out to be in this equation? So, mere bachon, this equation in mathematics is called first order differential equation. First order differential equation. You will get at least 70 times in whole JEE syllabus. At least 70 times you will encounter this equation in your JEE syllabus. The similar kind of equation in JEE syllabus. In chemical kinetics, when they teach you first order kinetics,
In radioactivity, when they talk about dN by dt is equal to lambda minus lambda n. In LR circuit also, you are going to read the same kind of equation. In motional EMF problem, you will get the same kind of equation. In viscosity problem, you're going to get the same kind of equation. In calculating pressure over the Earth's surface, thermodynamics, you'll get the same kind of equation. And in many other different small questions will be there where you get this kind of equation. Same equation you'll get at least 70 times. So I really want you have to be strong in this kind of equation. Whenever in life you'll find dx by dt is equal to a minus bx. This is the form of differential equation. Dx by dt is equal to a minus bx. A may be 0, b should not be 0. A can have 0 value, A can have non-zero value, but B cannot be 0. You can identify, if you see this kind of equation, dx by dt, A minus bx. A minus bx, this is called first order differential equation in which x will finally saturate. मतलब क्या है इसका? X will finally saturate. Yani in this kind of question, there will be final asymptotic value of X. Yani X अगर बढ़ रहा है इस सवाल में तो X will increase and reach to a maximum value. X if X is decreasing, X will decrease and reach to the minimum value. So there will be always a saturated value. This is the final value in all the question. In capacitor, when we say charge, we call it steady state charge. What is the final steady state charge? In viscosity, we will use the same thing and we'll say the term terminal velocity. Find out the final saturated velocity. Saturated means it is going to have this value now. It is not going to change. It is called saturated value. X will finally saturate. क्या मेरी बात समझ में आई? And how to find out that saturation value? X will finally saturate means now if finally X will attain a value and it is not going to change later. This is what saturation means. This is what saturation means. Clear hai? And this can be calculated without solving, because if X is saturate, X is not changing, implies dx by dt is equal to 0. If X got saturated at that moment, can I say dx by dt equal to 0? So if dx by dt is 0, then you can find out the value of X, that is X infinity is A by B. X infinity means X key final value. The final value of X is always A by B. The final value of X is always A by B. X will finally reach to the value A by B. And the solution of this equation, ये तो final value हो गई. General answer इसका याद रखना है, X is equal to X naught plus X infinity minus X naught 1 minus e to the power minus bt. This is the after integration, you will get this value. X is equal to X naught plus X infinity minus X naught 1 minus e to the power minus bt. What is X naught here? What is X naught here? Initial value, and it must be given in the equation. You cannot calculate the initial value of the X, because that must be given in the equation. I don't know how from what value you have started the game. X naught must be given. Good. So please remember this answer and these two things in general, because obviously I need not to tell this thing in general because I have to teach only capacitor in this class, but it is very important. Because why it is very important? Because it comes several times in your journey. It comes several times. So whenever in chemistry also, they'll say that some compound is going under first order kinetics. Initially it was taken this, and it is made by in a factory also. It is being dissociated as well as it is being made in factory. Then you will write some equation, dx by dt is equal to this. Then you need not to solve this equation to get the answer. Don't waste your time in integration and all. You just know what is the answer. You get the answer. So in capacitor, in case of capacitor, come back to the capacitor thing.
इन कैपेसिटर यू विल रिमेंबर ट्रांजिशन स्टेट का कोई भी सवाल हो, ट्रांजिशन स्टेट का ट्रांजिट जब कर रहा हो तो Q का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Q नॉट प्लस Q इन्फिनिटी माइनस Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t by RC. Q is equal to Q naught plus Q infinity minus Q naught 1 minus e to the power minus t by RC. Q is equal to, and you need not to worry about charging, discharging, nothing is there. Because we generally have studied charging of capacitor and discharging of capacitor. But there will be partial charging, there will be partial discharging. There will be 4 cases. 4 cases means what? For example, if Q naught is more than Q infinity, what does that mean? Discharging. And in this special case, if Q infinity is 0, so this is complete discharging. And if Q infinity is non-zero, it is partial discharging. आपने जब पढ़ा होगा तो सिर्फ यही वाला पढ़ा होगा. Q infinity 0 होगा और Q naught कुछ वैल्यू होगी. Just put Q infinity 0 and Q naught की कुछ वैल्यू. So will we get Q is equal to Q naught minus Q naught 1 minus e to the power minus t by RC. And if you open it, can we get Q equal to Q naught e to the power minus t by RC? Have you read this? Have you read this in discharging? So it is a very special case. And in JEE, they can ask you charging, discharging, partial discharging. It is a very special case. Just a case कि Q infinity is finally 0 and Q naught is given. Or in some cases, and for example, if discharging is there, what will be the graph? You just have to see what is the Q naught. You just have to see what is Q infinity. You know Q infinity is less than Q naught. The graph will be like this. The graph will be like this. And if the situation is this is Q naught and this is Q infinity, it means what is happening? Charge is increasing. It means it is a case of charging. So the graph will be like this. It ultimately reaches to Q infinity. If you start from lower value, you will reach to the higher value. If you start from higher value, you will reach to the lower value. As simple as that. There are 2 possibilities of graph only. Either it is this way or it is this way. Because finally it is going to be asymptotic. Asymptotic मतलब समझते हैं? Asymptotic curve means which is finally tending to, which has a tangent at infinity. Which has a tangent at infinity. यानी infinity पे इसकी tangent draw करूंगा तो ये आएगी. Approaching, asymptotic. Good. So now, for example, this question comes in your paper. This question comes in your paper. This is a capacitor C. It has charge plus CV by 2 minus CV by 2. And there is a battery of EMF 2V. EMF 2V. And switches. And question is, at t equal to 0, switch is closed. Switch is closed. T equal to 0, switch is closed. Now they are asking different type of question. I'll solve each and every type of question and please learn from each and every type of question. The resistances are. The first question they will ask, final charge on capacitor. Final charge on capacitor. तो अभी क्या बताया मैंने? फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर में क्या हो जाएगा? फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर का मींस चार्ज का चलना बंद हो जाएगा. dq by dt becomes 0. So if dq by dt becomes 0, it means there will be no current in the circuit. That is why they say कि in steady state, यानी finally capacitor works as open circuit. Why they say capacitor works as open circuit? Because they just want to tell you in a steady state dq by dt becomes 0. It means there is no flow of charge. There is no flow of charge. That's why they say capacitor in a steady state behaves as open circuit. So if somebody asks final charge on the capacitor, तो भी initial दिया हो, इसको नहीं देखेंगे. No need to see. There is no need to see whatever is given. Whatever is given is given. Forget about it. It is just Q naught. To calculate the steady state charge, you need not to see what was the initial charge. What do you have to do?
you just assume final charge is Q and minus Q and apply loop law. Yahan se yahan drop. What is the drop from here to here? Q by C. No drop here because I is 0. There is a gain of 2V. So we got the equation Q by C is equal to 2V. Q by C is equal to 2V. Why I am telling you this method? Because there may be case where the multiple capacitor and resistances will be there. But this is the only method you have to do. Forget about initial charge, whatever the initial charge is given. Don't look at the initial charge when you are interested to find out final charge. Is it clear? So what you have to do, assume charge Q and loop law. Q by C, there is no current in this branch. IR is 0, minus 2V equal to 0. Q by C बराबर 2V. तो आपका आंसर आ गया Q infinity steady state charge is 2CV. Q infinity is 2CV. Now they'll ask, find out charge as a function of time. Find out charge as a function of time. This question you just ask normal people, they will take a lot of time to find out final charge. What you have to do? You just have to use the equation what we have learned. We know the solution of this. We know Q is equal to Q naught. Can you tell me what is Q naught? CV by 2 plus Q infinity 2CV minus CV by 2 into 1 minus e to the power minus t by RC. This is the final charge. This is the final charge. They can ask you, find out graph of charge. So you will start from CV by 2, you'll go to 2CV. This is the graph. This is the graph. C by 2 to 2CV. Another type of question they will ask. Please listen each and every question they can ask you in this particular question, this particular photo. They can ask you, what is work done by battery? What is work done by battery? Work done by battery. Work done by battery. We know the potential difference across the battery is 2V. The potential difference across the battery is 2V. And if Q charge flow through the battery, then the work done by the battery will be Q into potential difference, which is Q into 2V. Can you tell me what is the amount of charge flow from the battery in this particular question? So charge flow is, you have to find out Q flow. That comes out 3CV by 2. And just multiply this Q with EMF. So work done by battery is Q flow into EMF, which comes out 3CV square. Is it right? So whenever this kind of question will be there, what is the work done by the battery? The answer is 3CV by 3CV square. But this is a method. The answer is not 3CV square in all the question. This is the way you will solve the question. You just need to find out what is the amount of charge flow from the battery and then multiply with the EMF, get the answer. This is work done by battery. Another thing they can ask you, what is the heat loss in the circuit? Heat loss in the circuit. Then you have to see, this is the guy who is doing work. This is the guy who is storing energy. This is the guy who is losing energy. There are three elements involved. 2V battery is someone who is working. Capacitor is someone who is storing. Resistance is someone who is losing. So if I say simple mathematical addition, whatever work he is doing, some part of his work will be stored in it and some part of his work will go as a heat loss. So we will use this. मैंने कहा battery say how much work you have done. He has given me the answer 3CV square. मैंने कहा where your work goes. तो इसने कहा this my work is used as energy for capacitor and heat in resistance. मैंने कहा capacitor के पास गया. मैंने कहा what is the energy you stored? उसने कहा कि when I came to this circuit, I had some energy. मैंने कहा what was your initial energy when you came to the circuit? उसने कहा my energy was half CV by 2 square by C. Is it right? Is it the energy capacitor came with? Bolo? It is the energy a capacitor came with. And finally, capacitor will have half
the new charge is 2 CV whole square by C. It is a final energy capacitor will have. So in this, what does that mean? In this circuit, the capacitor gained energy UF minus UI. Capacitor gained energy UF minus UI beta. So if you calculate how much capacitor has gained, so you can find out the value of capacitor has stored this much energy UF minus UI from this circuit. Initially it came with some energy, finally it has some energy, then obviously this increment is done because of this battery. It means this UF minus UI is the amount of energy stored by capacitor in this circuit. And battery has done work 3 CV square. Where does the difference will go? In the heat loss. So in the heat loss can be calculated work done by battery minus delta U. It's a simple arithmetic equation. Work done by battery minus delta U. But you need to practice beta. If you guys won't practice, then obviously there will be no benefit. You practice lot of questions and ask doubts. It is very important to ask doubts because those will be the best way to learn. And the last class also, I have told the same thing to some guy who asked how it is possible to cope up in this fast pace. If you haven't studied a single bit, then this is not going to benefit you, of course. If you say I am at the very zero level, so I must be honest that it is not going to, because everything will be goofy for you. What is happening? What is this Q, CV, PV? What is happening? If you have studied a little bit and you want to revise, this course is actually intended to increase your performance level for JEE Mains examination. It is not a course which will make you reach there from zero. For that, you need to practice. You have to study before coming to the class. You have to do a lot of work and get the answer. So, do the questions, do PYQ of capacitors, and ask your doubts, and just ask the team, whoever is in touch with you, how to connect with NMS sir in Telegram group or something like that, so that they can help you in that. And in that case, you can ask questions, put your doubts. You can directly communicate with me for question and answers. And you can ask question 24/7. I mean, as I see the message, I'll reply. If I'm busy that time, obviously I cannot see that message because as I'm in the class, I cannot see the message. But as soon as I see the message, I'll reply. Okay, bye, Regal. So we go enjoy your life if you find it enjoyable. Otherwise, make it. Bye, 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 bye.